Hello everyone, very good evening one and all. Welcome to this Maha Abhyas on Python programming for exclusively GATE 2025 aspirants. So सब लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाए. अंबी सिंह, ANK, अनिकेत सिंघा, तमल दास, स्वप्निल जोशी, आइंस्टाइन. वेरी गुड इवनिंग. कैसे हो बेटा? How are you all doing? Hi, Hani Sinha. Hi, Alexa, Master. Master, in yesterday class, we have got the revision on our Python programming concepts, which are meant for the GATE exam. So today there will be practice on the same. Hi, Akash Pandey. Hello, Digvijay Jadhav. Hi, ML. Great. Yes, I am good. Thank you so much. So guys, hope you are all ready for the Maha Abhyas of Python programming. Yes, सब लोग रेस्पॉन्स दे दीजिए. उसके साथ एम आई ऑडिबल एंड विजिबल ये भी कंफर्म कर लीजिएगा. आकाश पांडे, यस ऑफ कोर्स आई हैड ए गुड स्लीप, राइट. हाय रोशन, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? एक बार फटाफट से ऑडियो वीडियो सही है या नहीं कंफर्म कर लीजिए बेटा. ऑडियो वीडियो बोथ क्लियर? ओके, ग्रेट. सो बेटा आप सब लोग याद रखिएगा इंस्ट्रक्शंस. मैं आपको क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम देता हूं, पोल एनेबल करता हूं. आप फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ के समझ के सॉल्व करके पोल से, मतलब आपका स्क्रीन पे पोल दिख जाएगा. थ्रू दैट पोल you please select your answer or type your answer. Okay? Through poll, when you give the answer, then only your marks or your responses will be recorded so that you will be part of the leaderboard. तभी आपको सही से समझ में आएगा आप कंपटीशन में कैसा परफॉर्म कर रहे बोल के. ठीक है, सब लोग को ये क्लियर है ना? चलो फटाफट से स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज हियर. ये क्या है? दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप QR कोड. बेटा आपको कल वाला सेशन का PDF चाहिए होगा, आज वाला सेशन का भी PDF मांगते आप लोग, है ना? And you may want to ask some doubts to me, you may want to get some guidance, or you may want to interact with your colleague students. So सबका एक one stop solution है ये टेलीग्राम ग्रुप. So you may scan this QR code and join my telegram group if at all you have not joined. Okay, चलो अभी तो क्वेश्चन आएगा. चलो, first question of the day. This is the first question on your screen, beta. Consider the below Python expression. The order in which the below operations are performed is dash. Expression is exp equal to var1 left shift
var2 XOR var3 plus var4 and var5 exponentiation var6 less than or equal to var7. Okay, I am enabling the poll, giving you 1 minute time. You should select your answer through the poll beta. Please mind this before you give your answer in the chat box. पोल से दे दीजिए, तभी आप लीडर बोर्ड में पार्ट हो जाएगा. Yes, you can give your answer through the poll now. जयंत राज, ऑफ कोर्स, बट अभी सेशन में तो मैं तेलुगु थोड़ी बात कर सकता हूं ना. प्लीज गिव योर आंसर थ्रू द पोल. That's okay. You are not getting the poll. You are not getting the poll. अच्छा, ठीक है, कोई नहीं. इसका सही जवाब क्या है? We have here assignment operator. That's okay, that's okay. Let us not waste the time in discussing that. Chalo. We have assignment operator, left shift operator, XOR operator, addition operator, logical and exponentiation, and comparison or relational operator. Right. So now, which has more priority? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है बेटा? एक्सपोनेंशिएशन का है, ये 7 ऑपरेटर में. तो एक्सपोनेंशिएशन पहले परफॉर्म होगा, इसके बाद एज पर द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी टेबल किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? एडिशन ऑपरेटर का, अर्थमेटिक ऑपरेटर का. एंड देन so we are done with addition, we are done with exponentiation. Now we have shift, bitwise XOR, relational, logical, assignment. Now which has more priority? Shift operator, shift operator. And then we have bitwise XOR, bitwise XOR. Now in relational and logical, which has more priority? Relational has more priority. Then for logical, and the least precedence is for assignment, and the least precedence is for assignment. So this should be the order of evaluation. So exponentiation, addition, left shift, XOR, less than or equal to, and yes, undoubtedly option B is the right answer. Option B is the right answer. Yes, I can see your answer here. Yeah, chat box ही आपका पोल है. ठीक है. So Einstein, ANK, Ambi Singh, Tamaldas, Arushi Sharma, Swapnil Joshi, Hashtail the storyteller, Rohan Patil, Akshit Bhatnagar, Jayant Raj, ML. Good.
होप यू कैन सी दिस। चलो, नाउ second question of the day on your screen. Match the following collection types with their characteristics. List 1 has sets, tuples, lists. List 2 has ordered mutable, unordered mutable, ordered immutable. बस आप आपका चैट बॉक्स में दे दीजिए, आप आपका चैट बॉक्स में दे दीजिए बेटा। जस्ट गिव योर आंसर इन द चैट बॉक्स। मैच द फॉलोइंग सेट्स, टपल्स, लिस्ट। लेकिन आप आपका जवाब पोल एनेबल करने के बाद देना है, तभी ये टूल आपका आंसर्स को कैप्चर कर पाओगे। ऑल आर विथ ऑप्शन सी एक्सेप्ट तुषार, I think. Okay. Come on, hurry up. Time is running out. किसको भी आपका ऑप्शन, आपका आंसर चेंज करना चाहिए तो फटाफट से कर लेना। Okay, I can see all your responses. Somebody are giving option A. Okay, option B, right. Time up. We know one thing is for sure, tuples are immutable, undoubtedly. Sets का तो थोड़ा हमको डिलेमा तो है, मैं कल बोला था, आई थिंक हनी सिन्हा ही पूछा था, सर सेट्स मैं गूगल में देखे तो म्यूटेबल दिख रहा है सर, आप इम्यूटेबल बोले। तब मैं आपको कल वाला सेशन जो भी देखा होगा, कल मैं क्लियर कर दिया था। सेट्स और डिक्शनरीज का म्यूटेबिलिटी पे हम ऐसा डिविडेंड डिस्कशन देखते इसीलिए, बिकॉज दे आर पार्शियली म्यूटेबल, पार्शियली इम्यूटेबल। Sets are mutable. In what sense? You will be able to add items and remove items, but you will not be able to modify items. Dictionaries are mutable. In what sense? Values are mutable, but keys are immutable. अगर आपको याद है तो कल वाला सेशन में मैं ये बता दिया था। तो टपल का ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी कुछ है नहीं। Tuples are undoubtedly immutable. Ordered B. So undoubtedly tuples will be ordered immutable. So B3 हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहे हैं। ठीक है, और भी मैच करने के लिए देखेंगे एक बार। सेट्स, एज पर दिस ऑप्शन, सेट्स unordered mutable. Yes, sets are unordered undoubtedly. Lists are ordered. So यहां पे अगर हम मैच करना चाहे तो undoubtedly sets are unordered, lists are ordered. Yes, the right answer is option C बेटा, option C ही होगा। Let's see, 20 students answered it correct. Good. Shots, आइंस्टाइन, स्वप्निल जोशी, एमएल, आकाश पांडे, एएनके, प्रवल्लिका, अनिकेत सिंह, अंबी सिंह, तमल दास, आरुषि शर्मा, अंजलि मालविया, टोनी, कुहेली, धन्या, हनी सिन्हा, जयंत राज, प्रमोद, देवांगी, डॉटर ऑफ क्राइस्ट। देखो बेटा, आप ये लीडर बोर्ड पे आना है, वो भी टॉप में आना है। यहां टाइम के साथ डिस्प्ले कर रहा होगा, ये भी आप ध्यान दो, क्योंकि मैंने कल ही बोला था, अब भी बोल रहा हूं, गेट जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पीड के साथ एक्यूरेसी मेंटेन करना जरूरी होता। ऐसा सिंपल क्वेश्चंस आपको गेट में नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिलेगा। आप गेट 2024 और डीए पेपर अगर देखें तो ऐसी एक सिंपल मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, स्टैक क्यू हैश टेबल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लुकअप ऑपरेशन करके, अगर किसको भी याद है तो। सिमिलर क्वेश्चन,
So gate may be like this, you can get simple question. So you should save time for these kind of questions. That time you should avail, you should use for the complex or lengthy questions. समझ रहे, समझ रहे बात? So आप टाइम पे भी ध्यान देना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. What does the following Python code segment print? This is a numerical answer type question. इसके लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा. सो मैं टाइमलेस करके पोल एनेबल कर रहा हूं. 2 मिनट का टाइम तो 3 मिनट का टाइम तो मैं आपको दे सकता हूं बेटा. फटाफट से आप इसको सॉल्व करके जवाब दे दीजिए. इसका थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसीलिए मैं टाइम कंस्ट्रेंट नहीं रखा. एक 3 मिनट के बाद ये पोल को मैं एंड करने वाला हूं. बट बी क्विक, जस्ट 3 मिनट्स टाइम यू हैव. 3 मिनट ज्यादा है बेटा. अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शंस वाला पोल दिया था ना. ओके या नाउ यू कैन गिव योर आंसर. वो पोल वो तो सबको सबको ये कैंसिल हो जाएगा, कोई नहीं. हरी अप. Yeah, keep giving your answer in answers in the chat box. Last 90 seconds time I can give. Last 90 seconds. All are giving 8. What does this Python code segment print? Okay. Hurry up. Last 30 seconds. Last 30 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time up. ये भी ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के अराउंड क्वेश्चन है. डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट दिस मॉडल क्वेश्चन इन द गेट एग्जाम, अनडाउटेडली. ठीक है, तो पहले ये सॉल्व करेंगे.
हमको बहुत सारे ऑपरेटर्स है, सब में किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? अरिथमेटिक ऑपरेटर का ज्यादा है, उसमें मल्टीप्लिकेशन फ्लोर डिवीजन का ज्यादा है. And what is the associativity of multiplication and floor division? Associativity क्या है? Left to right. So पहले 5 multiplied by 2 होगा, 5 multiplied by 12 60 होगा, 60 floor division 4 that is 15. So this is done, this is done. Now arithmetic operators और भी है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इसका भी एसोसिएटिविटी क्या है? लेफ्ट टू राइट. So now 6 plus all this value became 15. So 6 plus 15 that is 21, and now 21 minus 3 that is 18. That is 18. So addition is done, subtraction is done. Then we have left shift, right shift, bitwise operators. So first shift operators, इसका भी associativity क्या है? लेफ्ट टू राइट है. So all this value became 21. 21 left shift by 2 times, that is 21 multiplied by 4, that is 84. And now 13 right shift by 3 times. 13 right shift by 3 times. This is 13 divided by 8. Of course, floor division by 8. This would be 1. So this value became 1 and this value became 84. This value became 84. मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसीलिए इतना टाइम ले रहा हूं. अगर मैं खुद के लिए किए तो फटाफट से कर सकता हूं, राइट? नाउ शिफ्ट आर डन. Next we have bitwise and XOR. Which has next priority? Bitwise AND. So 11 bitwise AND, all this value became 84. So 11 and 84. So 11 in binary would be 8 plus 2, 10 plus 1, 11. 84, 64, 16, 84. Now do AND operation. 1 and 0, 0, 1 and 0, 0, 0, 0, 0, 0. सब 0 हो गया. Now XOR operation with what? 1 XOR 18. This value is what? 18. So 1 XOR 18. One binary value is this, and 18, 16, 16 plus 2, this is 18. XOR, it would be 1 0 0 1 1. This is 16 plus 3, 19. So this value became 19. Now finally 0 or 19. 0 or 19. Yes, this value is 19, of course. So what is A value? 19. Now B, let us solve B. So on this first
6 multiplied by 5, that is 30, and then 21 minus 3, no, floor division hai, 30 floor division 12, that is 2, and now multiplication, 3 multiplied by 21, 63, 63 minus 3, that is 60, and now shift operator, that is 2, right shift by 4 times, that would be definitely 2 by 16, 0, and then 13 left shift by 60 times, oh my goodness, 13 multiplied by 2 power 60, ये तो बहुत बड़ा वैल्यू आ रहे, ठीक है रहने दीजिए. नाउ एंड ऑपरेशन विथ व्हाट, 2 and 13 multiplied by 2 to the power 60, ये क्या होगा, Akash, no, star will come first because they are left to right associativity. उसका प्रायोरिटी तो सेम है ना, उसका प्रायोरिटी तो सेम है ना. ओके, सो 2 and 13 multiplied by 2 to the power 60, इसका क्या वैल्यू आएगा, whenever you are multiplying or shifting 13 left by 1 position, देखो इसका थोड़ा लॉजिक देखो, मैं 13 ले रहा हूं, 8 प्लस 4 प्लस 1, इसको एक लेफ्ट शिफ्ट किए तो ये होगा 1 1 0 1 0, और एक बार किए तो 1 1 0 1 0 0, और एक बार किए तो 1 1 0 1 0 0 0. Like this, whenever you are doing it for 60 times, you will get 1 1 0 1 0 0 0 so on to 0 0, 60 zeros आएगा. Okay, and 2 तो definitely 0 0 0 so on 1 0. And operation when you do, only when in the second last position you have 1, then only you will get 1, otherwise 0. So इसका तो definitely 0 होगा, definitely 0 होगा. ओके, ये थोड़ा लॉजिक से आप समझना है, ठीक है. ये तो 0 हो गया, कहां से कहां तक, यहां से लेके नहीं, यहां से लेके ये पूरा वैल्यू 0 हो गया. इसका वैल्यू क्या हुआ अभी, इसका वैल्यू क्या हुआ, ये भी 0 हो गया. नाउ 11 XOR 0, 11 is what, 1 1, no 1 0 1 1 0, so it would be 1 0 1 1, right. So 11 XOR 0 would be 11 only, and finally 11 or 0, 11 or 0 will be 11 only. So what would be B value, 11. Now finally print A minus B. So 19 minus 11, 8. Yes, 8 is the right answer. 8 is the right answer. Oh, good.
आकाश शॉर्ट्स, कुहेली, जयंतराज, गिरजरंगा, आइंस्टाइन, तुषार, ANK, धन्या, तमलदास, प्रवल्लिका, अंबी सिंह, स्वप्निल जोशी. वेरी गुड. होप यू हैव कंप्लीट क्लैरिटी. यू हैड कंप्लीट क्लैरिटी ऑन दिस. किसी को भी कुछ डाउट है तो बता देना. किसको भी कुछ डाउट है तो बता देना बेटा. नहीं तो आप चैट बॉक्स में ये टाइप करिए प्रोसीड. प्रियदीप बस आप आपका चैट बॉक्स में दे दीजिए आपका जवाब. ये सॉफ्टवेयर कैप्चर कर लेगा. इफ एट ऑल यू हैव नो डाउट, please type proceed in the chat box. Everybody please type proceed in the chat box. Okay, question number 4 on your screen. The final value of result is dash. Final value of result is dash. You have a loop. Inside the loop you have match case. ये मॉडल कल भी हम सॉल्व किए थे. सो फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए 2 मिनट में. 2 मिनट में. 2 मिनट तो बहुत ज्यादा है. 90 सेकेंड्स काफी है. यस. फटाफट से दे देना. Priyadeep Sahu, you can just give your answer in the chat box. This will automatically capture. Okay, I am getting already responses. मेरे को मिल रहा है. गौरव शर्मा, सुजित गुहा, आकाश पांडे, तमलदास, कुहेली बैनिक, ANK, प्रवल्लिका, धन्या ठाकुर, आइंस्टाइन. टॉप 20 स्टूडेंट्स का ही मैं लीडर बोर्ड दिखाता हूं बेटा. टॉप 20 का ही मैं आपको दिखाता हूं. सो always make sure you give your right answer in the less time. Hurry up. Time is running out. 1, 2, 3, 4, 5. Time up. Result is 1 for I in the range of result, 11, 3. So this is start value, this is stop value, this is step value. Once the range function, a range function का नेचर या कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होते, आप पहले दिए सो वैल्यूज को वो फीड करके वो वैल्यूज से ही लूप चलाते. इनसाइड आप ये वैल्यू को चेंज किए तो भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो वंस यू इनिशियलाइज द स्टार्ट टू 1, सो ये ऐसी ले लेगा. बिफोर इट रन द लूप इट विल लॉक दिस पैरामीटर्स. आप बाद में रिजल्ट को चेंज करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो इसका मतलब I होगा 1, then step will be +3, 4, step will be +3, 7, step will be +3, 10. +3 मतलब वो 11 से बाहर जाएगा. So this loop run for only 4 times. First I value is 1. केस 1 यहां है. पाइथन में सिर्फ मैचिंग केस ही एग्जीक्यूट होते बिना ब्रेक भी. So result equal to result into result minus 1. So result is equal to result
multiplied by result -1. So ये क्या होते? 1 multiplied by 1 minus 1, that is 1 minus 1 तो 0 है, so result हो गया 0. Now remaining cases will not execute like C language. पाइथन में सिर्फ मैचिंग केस ही एग्जीक्यूट होते. अगर मैचिंग केस नहीं मिले तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होते बस, अगर डिफॉल्ट केस लिखे तो. नाउ i इक्वल टू 4, यहां है केस 4, सो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस 3. सो रिजल्ट कितना होगा? 0 प्लस 3. सो पहले 1 से 0 हो गया, अब 3 हो गया. नेक्स्ट i इज इक्वल टू 7, केस 7 हाई नहीं, सो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होते. क्या बोल रहे? रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाई 2. सो रिजल्ट इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 6. नेक्स्ट i इज इक्वल टू 10, केस 10 हाई नहीं, सो फिर से डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होते. डिफॉल्ट केस में क्या कर रहे? डबल कर रहे. सो रिजल्ट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12. So final result will be what? 12. Twelve is the right answer. Okay. Gaurav, Sujit, Akash, Kuheli, ANK, Dhanya, 90-degree facts. Only 7 students answered correct. क्यों ऐसे? आपका जवाब चेंज किए तो इट विल नॉट प्रोसेस. ओके, नो इश्यू, नो इश्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डज द फॉलोइंग पाइथन कोड सेगमेंट प्रिंट? What does the following Python code segment print? This is some nested loop question. Nested loop question. So I am giving 2.5 minutes time. Do it quick. सुजीत जी, नहीं बेटा, मैं साउथ से हूं, आंध्र प्रदेश, बट सेटल्ड इन तेलंगाना. Guys, if you are not hard coding, if you are using the compiler, मतलब कुछ टूल यूज करके अगर आप जवाब दे रहे तो प्लीज डोंट डू दैट. हार्ड कोड करके आप आपका जवाब दे दीजिए प्लीज. आपको गेट एग्जाम में कुछ टूल आपको नहीं मिलेगा, कुछ कंपाइलर नहीं मिलेगा. Please solve it with pen and paper. Hurry up. Time is running out. When you don't hurry up, time will be up. Quick. I can see 94 by most of the people, 90 by Ambi Singh, Swapnil, 95, Kaustubh 97, Dhanya 12. Okay.
ML94, 5, 4, 3, 2, 1. Time up. I have given 2.5 minutes time. Chalo, let's solve. Initially result equal to 5 for I in the range of 4. So I will be 0, I will be 1, I will be 2, I will be 3. Now, when I is 0, first I becomes I multiplied by 2, I becomes 0 multiplied by 2, 0. For j in the range of I, so j will be j in the range of 0 means it will not execute. The first loop will not run. First loop will not run. I mean first inner loop नहीं चलेगा. I फिर से 0 से 1 को इनिशियलाइज होगा. I is equal to I into 2. I becomes 1 multiplied by 2, 2. For j in the range of I, j in the range of 2, that means j will be 0, j will be 1. J plus is equal to 1. When j is 0, j plus is equal to 1. J becomes 1. Result is equal to result plus, that is 5 plus I. I is what? 2 plus j. J is what? 1. So 8. Now j becomes 1. J becomes 1. Then j becomes 2. Result will be 8 plus I is what? 2 plus 2. That is 12. Now the first outer loop execution is done. Now I becomes 2. सर I 3 होना है ना, वही बोल रहा हूं. रेंज का कैरेक्टरिस्टिक समझ लो. रेंज पहले ही I को इससे इनिशियलाइज करके लॉक करके रहेगा. सो I 2 से फिर से 2 को इनिशियलाइज होगा. फॉर j नेक्स्ट I is equal to I multiplied by 2. So I becomes 4. For j in the range of I, so j0, j1, j2, j3. When j is equal to 0, j plus is equal to 1, so j banega 1. Result will be is equal to result plus I plus j. That is 12 plus 5, 17. J equal to 1, j becomes 2. Result will be 17 plus 4 plus 2. That is 17 plus 6, 23. Here j becomes 3. 23 plus 4 plus 3. That is 23 plus 7, 30, 30. Here j becomes 4. 30 plus 4 plus 4, 38. Now I becomes 3. Then I becomes 3 multiplied by 2, 6. For j in the range of I, अब इनर लूप 6 बार चलेगा. For j 1, 2, 3, 4, 5. जब j 0 होता पहले इंक्रीमेंट होगा. रिजल्ट विल बी रिजल्ट प्लस I प्लस j. 38 plus 7, 45. j becomes 2. 45 plus 6 plus 2, 53. j becomes 3. 53 plus 6 plus 3, 53 plus 9, 62. j becomes 4. 62 plus 6 plus 4, 72. j becomes 4 and then 5. 72 plus 6 plus 5,
72 plus 11, 83, and now j becomes 6. 83 plus 6 plus 6, 83 plus 12, 95. So the final result will be 95. मैं आपको एक्सप्लेन करते करते कर रहा हूं ना, इसीलिए इतना टाइम लगा था. अगर मैं खुद के लिए किए तो डेफिनेटली आई कुड हैव सॉल्व्ड इन 2.5 मिनट्स. मैं आपको 2.5 मिनट से ज्यादा ही टाइम दिया था डिस्प्ले करके, थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस देके, तब मैं पोल एनेबल किया था ना बेटा. सो वही स्पीड को बढ़ाने के लिए कोशिश कर लो, कोई नहीं. ओके, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Poll time is not enough. Okay, I'll try to give little more time. Okay, only Swapnil has answered correct within the time. Okay, next question. Question number 6 on your screen. What is the output of the following Python program? Okay, थोड़ा कंटिन्यू ब्रेक का खेल है, ध्यान से देखो. इंडेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा पाइथन में. इंडेंटेशन अच्छा सा देख लेना. मैं पोल एनेबल कर रहा हूं. 2.5 मिनट्स काफी है? नहीं सर, 1 to 11 दिए. ओके, टाइमलेस करूंगा. चलो सॉल्व करो. फटाफट से करना बेटा. बस 40 मिनट में हम 5 क्वेश्चन ही कर पाया. ऐसा है तो आज का सेशन भी 12 तक चलेगा. डू इट क्विक. ठीक है, मैं तो कुछ टाइम लिमिट दिया नहीं. आप थोड़ा शांत से करो, थोड़ा केयर से करो. NAT पोला, हाँ राइट. मैं ऑलवेज ये भूल जा रहा हूं. देखो अब फिर से आपका जवाब दे दीजिए सब लोग. नाउ यू गिव योर आंसर अगेन. मैं NAT पोल देना था ना. फिर से आपका जवाब एंटर कर लो. Okay, shall I stop the poll? Shall I stop the poll?
आकाश पांडे, देखते बेटा। ओके, आई एम स्टॉपिंग द पोल। आई जे इनिशियली 1, फिर भी ये तो फिर से 1 को ही इनिशियलाइज होगा, यहां आई का वैल्यू से कुछ मतलब नहीं। फॉर आई इन द रेंज ऑफ 1, 11, so I will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार चलेगा ये लूप। ओके, इफ I mod 3 not equal to 0, 1 mod 3 not equal to 0, first if true, so j plus equal to 2, j becomes 1 plus 2, 3, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या है? कंटिन्यू के बाद जो भी कोड है वो स्किप होगा, अगले इटरेशन पे जाएगा, अगले इटरेशन पे जाएगा, है ना? आपका कमेंट ही दिख रहे नहीं। हाँ। ठीक है, I equal to 2, 2 mod 3 not equal to 0, true, j plus is equal to 2, j becomes 5, continue. I equal to 3, 3 mod 3 not equal to 0, false, so if will not execute, कंटिन्यू नहीं होगा, ये इफ पे आएगा। इफ j mod 3 इक्वल टू 0, इफ 5 mod 3 इक्वल टू 0, ये फॉल्स है, सो ब्रेक नहीं होगा, अगले आइटरेशन पे जाएगा। I becomes 4, नाउ 4 mod 3 नॉट इक्वल टू 0, ट्रू, फर्स्ट वाला इफ ट्रू हो गया, j प्लस इक्वल टू 2, सो j कितना होगा? 5 plus 2, 7, कंटिन्यू। I becomes 5, if becomes true, because 5 mod 3 not equal to 0, j becomes 9, continue. I becomes 6, if 6 mod 3 not equal to 0, false, first if became false, now second if will run, because continue nahi hote, if j mod 3 equal to 0, j is 9, so 9 mod 3 equal to 0, true, so क्या बोल रहे? ब्रेक, मतलब बाकी जो भी जितना भी आइटरेशंस होने दो वो पूरा स्किप हो जाएगा, यहां से कंट्रोल लूप के बाहर आएगा। फाइनल जे कितना था? 9 था। आई कहां पे एंड हो गया? 6 पे एंड हो गया, सो प्रिंट आई प्लस जे, प्रिंट आई प्लस जे, आई इज 6, j is 9, so what is the value of I plus j? 15. Okay, hello,
Everyone got it? So this loop will not run 10 times because of the break. So the right answer is 15. Okay. Roshan. Okay. अच्छा मैं MCQ पोल से NEAT पोल दोबारा दिया था ना, इसीलिए आप 1 सेकेंड में आंसर दिए. ओके. अंबी, पार्थराज, सार्थक, स्वप्निल, कौस्तुभ, धन्या ठाकुर, तुषार, तमलदास. गुड. अगला सवाल. ये 2024 DA पेपर में आए सो क्वेश्चन है बेटा, 2 मार्क वाला क्वेश्चन है. मामिडीपल्ली रेणुका भाई, ब्रेक से जब आई 6 था तब ब्रेक से फोर्सिबली कंट्रोल बाहर आ गया. अगले आइटरेशन इफ इट गोज टू नेक्स्ट इटरेशन then I could have been 7, but because of the break forcibly control came out, like you kicked out of the loop. कंट्रोल को बोले गेट आउट, इंटरप्रेटर को बोले गेट आउट फ्रॉम द लूप. उसको भी थोड़ा इमोशन रहता ना, सो वो आई को इंक्रीज नहीं करेगा. इन द जस्ट लाइक दैट इट गोस आउट. ओके. Okay. So consider the function computes. Function compute s of x whose pseudocode is given below. Which one of the following values is returned by the function for x equal to 6, 3, 5, 4, 10? Okay. Guys, यहां पे आप इंडेक्सिंग 1 से समझ लो. एज पर द क्वेश्चन इंडेक्सिंग आप 1 से समझ लो, नॉट फ्रॉम 0. So do this. Here are your options. Shubham Vishwakarma, I will tell you. Stay tuned. I will tell you the expected weightage. Mamidipalli Renuka by. That's why it is initialized. The same I is what changing. Same I is what changing. So it is the same I. It is not 1. It is same 6 only. Hurry up.
Time up. We are given the list X. We are given the list X. Now, the values in the list are 6, 3, 5, 4, 10. This is X. S of 1 equal to 1. Okay. S of 1 equal to 1. For I equal to 2 to length of X. What is the length of X? This is pseudocode beta. Length of X is 5. For I in the range of 2 to 5, it is something like that. So, I will be 2 first. S of I is equal to 1. So, S of 2 equal to 1. S of 2 equal to 1. If X of I minus 1, X of 2 minus 1 less than or equal to X of 2. X of 1 less than or equal to X of 2. 6 less than or equal to 3. False. So, this if will not run. Now, I becomes 3. S of I is equal to 1. S of 3 is equal to 1. If X of I minus 1, X of 3 minus 1 less than or equal to X of I is 3. X of 2 less than or equal to X of 3. 3 less than or equal to 5. True. So, S of I is equal to, that means S of 3 equal to S of I, that is 1. S of 3. What is S of 3? Initially it was 1, right? So, 1 plus S of I minus 1, S of 2, that is 1. So, S of I became 2. Huh? No. See, this means equal to. This backward arrow means equal to A and K. Less than or equal to is this. This is less than or equal to. ये सूडो कोड है बेटा. Means syntax free. Syntax free. Okay. Now I2 हो गया, I3 हो गया. I is 4. I is 4. S of 4 equal to 1. If X of 4 minus 1, if S of 3 less than or equal to S of 4, 5 less than or equal to 4, false. यहां से आप समझेगा it is 1 1 2 1 1 only. But as per the code, as it is a pseudo code, here it means 2 to length of X means length of X is inclusive.
ये कोड से हम समझ लेना। सर ऐसा तो कहां पे भी दिया नहीं, लेकिन ऑप्शन से कोड से समझ लेना। सूडो कोड में स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू इंक्लूसिव है। ओके, मतलब व्हेन I is equal to 5, then also code runs. S of 5 is equal to 1. If S of 4, X of 4 less than or equal to X of 3, 4 less than or equal to 10, true. If so, S of I is equal to S of I. So this means S of 5 is equal to S of I plus S of I minus 1, that is 1 plus 1, 2. So finally, what is the S list? 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2. Option C is the right answer. Okay. Aniket Singha, Swapnil Joshi, Akash Pandey, Einstein and Roshan given the right answer. All right. हनी सिन्हा, ऐसा नहीं बेटा, हम थोड़ा कॉमन सेंस से समझ लेना, कोड देख के थोड़ा समझ लेना। यहां ये कोड चलाने के लिए यहां S of 0 दिए तो AI 1 से देना पड़ेगा। If you take from 0, S of 0 का वैल्यू क्या है पता नहीं ना प्रियदीप साहू, what is S of 0 value? Throughout the code nowhere it is mentioned. So first value हमको कैसा मिलेगा? फर्स्ट वैल्यू हमको कैसा मिलेगा? ओके, चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. The output of below Python code segment is dash. We have got two lists and some operations and something we are doing. चलो, now I am enabling the poll. कुछ लूप है नहीं, सो 90 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं. डू इट क्विक. सब लोग अभी का देख लो बेटा, अभी का देख लो. 15 तारीख को होने का अभी लगभग 1 महीना टाइम तो है. वो हम कैसा तो भी हमको फेस करना ही पड़ेगा. इजी पेपर आए तो एग्जाम छोड़ के भाग जाएगा, नहीं ना. टफ आए तो भाग जाएगा. However, you have to face it. So why do you think much about the difficulty level up front? That too 1 month before. प्रैक्टिस अच्छा सा करो, पढ़ाई अच्छा सा करो, कितना भी डिफिकल्टी आने दो, देख लेंगे. ओके ओके आकाश पांडे, ओके, थैंक यू. हरी अप. टाइम अप.
टाइम अप। चलो, ये इक्वल टू सो एंड सो. So first let me form two lists. This is A and this is B. 10, 20, 30, 40, 50 with the indices 0, 1, 2, 3, 4. Okay, now B is equal to 11, 22, 33, 44, 55 with the indices 0, 1, 2, 3, 4. B dot insert 2 comma A dot pop. Pop by default removes the value at the last element, at the last index. उसको कहाँ इंसर्ट करने के लिए बोल रहे हैं? इंडेक्स 2 पे. सो B becomes 11, 22, 50, 33, 44, 55. इंडेक्स 2 पे पॉप किए सो वैल्यू को इंसर्ट करने बोले. ओके, नाउ ए डॉट अपेंड बी डॉट पॉप ऑफ 1 at index 1 value you should pop from B and you insert append to A. So here it is not like replacement. It is not like replacement. ये तो delete हो गया. Now ये लिस्ट इतना ही हुआ था, 4 एलिमेंट्स का ही हुआ था. Append will by default add the value at the end of the list. Which value? 22. Please don't take like it is replacing. 50 delete हो चुका है. Now B dot pop, B से A pop हो जाएगा. A dot remove 30, 30 है A में, है, रिमूव हो गया. A dot insert, ओके. सो अब इसके बाद ये वैल्यू क्या है? ये लिस्ट क्या हुआ? 10, 20, 40, 22. Now A dot insert 3 comma B dot pop. B लास्ट वैल्यू को रिमूव करके इंडेक्स 3 पे अपेंड कर लेना. So 10, 20, 40, 44, 22. Now what is B? Final B will be what? 11, 50, 33. These are the positive indices. These are the negative indices. Now this is the final A with positive and negative indices. Print B of minus 2. B of minus 2 is 50 minus A of minus 3 is 40. So 50 minus 40, 10. So the right answer is option D, 10. Is this clear? Is this clear? Oh, 9 answered it correct. Akash Pandey, Sujit, Kuheli, Einstein, Gaurav Sharma, Komal, 𝐴𝐴𝐿, Ambi Singh, Anjali, Malviya. Okay.
Question number 9 on your screen. The output of below Python code segment is dash. Okay. Do it. सर द आंसर इज ए लिस्ट. नहीं, वो कंप्यूटेशन कर रहे थे ना. आंसर लिस्ट में आए. अच्छा, शायद इसका आंसर लिस्ट पे आएगा. सही बात है, सही बात है. ओके, यू टेल मी u of 1. You tell me u of 1. इंडेक्स 1 पे रहे सो वैल्यू को एंटर करो. इंडेक्स 1 पे रहे सो वैल्यू को एंटर करो. Everyone please enter value that resides at index 1 again. आकाश पांडे. हाँ, okay, I stop the poll. Let's see. We have two lists, one tuple and one list. One tuple and one list. Tuple T is 1, 3, 7, 8, 7, 5, 4, 6, 8, 5, and list U is list U is 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Okay. Now U dot insert at index 4 T dot index of 8. T का इंडेक्स 8 में 8 ही थे, वो वैल्यू इंडेक्स 4 पे इंसर्ट करना कहते इंडेक्स 4 में. सो ये बनेगा 1 2 3 0 8 1 2 3.
Okay. Next, u dot insert at -6. सो इसका अभी नेगेटिव इंडिसेस क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. -6 इंडेक्स में t dot count of 5. How many count 5 are there? 2. So this is -6, 2. So u बनेगा 1, 2, 2, 3, 0, 8, 1, 2, 3. This will be u now. Okay. Now for I in the range of t dot index of 7, t dot index of 7, what is that? T is not changed, no? Okay. Index of 7 is 6. So it run for 6 times. I0, I1, I2, I3, I4, I5. क्या करना है हमेशा? u dot pop of 0. First value, last value, first value deleted. So first it delete 3, it delete 1. Last value, first value. Next, delete last value is what? 2. First value is also 2. Next, last value is what? 1. First value is what? 2. So it delete 1, it delete 2. When I is 3, it delete 8, it delete 3. Oh, एक मिनट. Index of 7. Oh, sorry. मैं index 7 लिया था ना. Value at index 7. Index of 7. What is the first index of 7? First occurrence of 7 is at 2. So ये तो 2 तक ही चलेगा. मतलब सिर्फ 2, 3 तो ऐसी रहेगा ना. 2, 3, 0, 8, 1. Sorry, it runs for only 2 times. It runs for 2 times. I have taken the value at index 7. Sorry. So print u of 1. So final u is what? 2, 3, 0, 8, 1. How many got this list as final list? How many got this list as final list? How many got this list as final list? Renuka, first insertion wrong. Index of 8. Sorry. Index of 8 is what? 3. Right.
करेक्ट करेक्ट ओके उससे तो fortunately no impact on it. Index will return the first occurrence index. Yeah, fortunately there is no impact in the result because of that. Yeah, Renuka bhai, correct. Okay, so but because of the poll I told you to give u of 1, u of 1, so u of 1 is 3. So in the poll you are supposed to enter answer 3. Okay, Akash Pandey, Roshan, Ambi Singh, Vaishnav Rathod, Einstein given the right answer. Good. Roshan, at index -6 you are inserting number of fives in T. How many fives are there? 1, 2 fives are there. So it will give you the frequency. Kitna hai? Value fives, we have 2 values. So at index -6 it enter. Means will it replace? Means no. All the values will shift right. All यहाँ स्पेस रखने के लिए यहां से सारे वैल्यूज राइट शिफ्ट होगा. So 3 0 3 1 2 3. Now you got space here. What to insert? 2 you have to insert. Okay. Next, question number 10. The output printed will be dash. F1, F2, F3 and this is the driver code. Print F1, 3. Print F1, 3. Okay, okay, Renuka. I have corrected that also. Okay. Give your answer now. Renuka 22303121. Okay. After this question, let us revise it again. After this question, I'll revise it again. Indentation is there. फटाफट से सॉल्व करो.
Are you done? Shall I stop the poll? Okay, I am stopping the poll. F1 of 3. Here x is equal to 3. If x less than or equal to 1, no. So return f1 of 2 plus f2 of 3 plus f3 of 3. What is f1 of 2? f1 of 2. f1 of 2. As it is not less than or equal to 1, it return f1 of 1 plus f2 of 2 plus f3 of 2. What is f1 of 1? 1. Okay. Now, what is f1 of 2 to know? You should know f2 of 2, f3 of 2. So पहले यहां आ जाओ. f2 of 2 क्या है? x वैल्यू 2 है, काउंट इक्वल टू 0. सो हमेशा काउंट 0 से इनिशियलाइज होते. x is not less than 0 for I in the range of x, count plus is equal to 1. Okay, so when I is equal to 0, when I is equal to 1, when I is 0 count होगा 1. यहां से फिर से बुला रहे f2 of x minus 1, f2 of 1. f2 of 1 क्या होता? x is equal to 1, काउंट फिर से 0 है. If is false, for I in the range of x means I will be 1 times 0, count होगा 1. f2 of 1 minus 1 0, 1 minus 1 0. So what is f2 of 0? X value is 0, count is 0. If x less than 0, no. So for I in the range of 0, it will not run. It will not run. Return count. So f2 of 0, return count 0. Okay. So ये यहां रिटर्न हो गया. ठीक है, you are not assigning this to any, no issue. Now it return count. यहां काउंट कितना था? 1 था. So f2 of 0 return 0, f2 of 1 returns 1, because this loop run for only one time, so it returned 1. Okay, fine. Now when I is equal to 1, count plus equal to 1, so count becomes 2,
f2 of x minus 1, f2 of x तो वही था 1, बट इससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि वो वैल्यू आप किससे भी असाइन तो नहीं कर रहे, ठीक है, रहने दीजिए। कैसे तो भी ये रिटर्न करेगा 1, यहां से 1 ही आएगा, सो रहने दीजिए। एंड रिटर्न काउंट, सो f2 of 2 returns finally what? Count, that is 2. So f2 of 2 returns 2. Now f3 of 2. What is f3 of 2? X is equal to 2. Count is 1. For I in the range of x. So f3 of 2 count will be 1. For I in the range of x is 2. So for I 0, I 1. When I is equal to 0, count plus equal to I. Count is equal to 1 plus 0, 1. f3 of 2, f3 of 1, but यहाँ फिर से ये f3 of 1 has no impact. It has no impact on count because every time count is initializing. So मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, f3 of 1 क्या है मेरे को नहीं चाहिए. I is equal to 1, count is equal to 1 plus 1, 2, f3 of 1 ignored. Return count. So what f3 of 2 return? f3 of 2 returns 2. f2 of 2 return 2. So f1 of 2 का वैल्यू क्या हुआ? f1 of 2 का वैल्यू क्या हुआ? 5. f1 of 2 का वैल्यू क्या हुआ? 5. Now f2 of 3 plus f3 of 3. f2 of 3 क्या कर रहे? x वैल्यू 3, count 0. For I in the range of x, count plus is equal to 1. f2 of 3 will make I is equal to 0, 1, 2. Count becomes, how many times count increments? 3 times. So count becomes 1, 2, 3. यहां से f2 of 2 का कोई इम्पैक्ट है नहीं. It has no impact. यहां पे भी काउंट में कुछ इम्पैक्ट है नहीं, तो वो आप बस इग्नोर कर सकते. सो फाइनल काउंट क्या है? 3. सो f2 of 3 रिटर्न 3. f2 of 3 return 3. Similarly, what would be f3 of 3? X value 3, count is 1, and the loop run for 3 times. Every time you are adding I value. So count will be 1 plus 0 plus 1 plus 2, that is 4. I will be from 0, 1, 2. And of course, every time I call f3 of 2, but it has no impact. Right? So I am ignoring that. Finally, what it returns? 4. Now, what is final return value? 5 plus 3 plus 4. 12.
ये रिकर्सिव कॉल का कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं या इंपैक्ट ही नहीं। बस आप ये मान लो ये नहीं है तो कैसा आप करेगा, एन के वही वही आप समझ लेना। इफ एट ऑल इट इज नॉट देयर, जस्ट अज्यूम दिस रिकर्सिव कॉल इज नॉट देयर, तब इजी होगा ना। इफ इट इज नॉट देयर, f2 of 3 will be 3, f3 of 3 will be 4, simple. f2 of 2 will be 2, f3 of 2 will be 2 only. So ये समझ लेना, ओके। आपको दिखाने के लिए इसका इंपैक्ट काउंट पे है ही नहीं बोल के मैं आपको 2-3 बार रिकर्सिवली सॉल्व किया था, आपको दिखाने के लिए। आप वो ही समझ लेना, इसका कुछ इंपॉर्टेंस या इंपैक्ट है नहीं, तो तब इजी होगा ना। इतना लेंदी तो दिख रहे हैं आपको, तब इजी होगा ना, ओके। Okay, no issue. Now we have completed 10 questions. So 10 questions में स्वप्निल जोशी is on the top, Ambi Singh second, Einstein on the next, Akash Pandey, 𝐂𝐚𝐭𝐜𝐡, Tamal Das, Dhanya, Jayant Raj. You can just check. Aniket Singha, Arushi Sharma, Shots, Gaurav Sharma, Tushar, Roshan, ML, Pravallika, Anjali, Sujit, Tony, Hashtail, Pardhraj, Rohan Patil, Akshit Bhatnagar, Kaustub, Pramod, Giraj, Devangi, Sardhak, Daughter of Christ, Roshan, Vaishnav, 90-degree Facts, Honey, Komal, Abdul, Priyadeep, Leelesh and Sinkar. Okay, good. We have more questions. Let us congratulate Swapnil, Ambi and Einstein. As of now, they are on the top 3. Guys, अब भी वक्त है. Just 1/4 of the session is over. मैं आपके लिए 40 क्वेश्चन बना के लाया. Just 1/4 of the session is over. चल, अगला सवाल. The written value of f of 423, 5 will be dash. फटाफट से करना. 2.5 minutes is more than enough for this. Okay, I am enabling the poll. ये तो ऑप्शंस का है. Quick. करेक्ट पारदराज. टाइम वेस्ट करने के लिए ही वो रिकर्शन का दिया था. वो काइंड ऑफ ट्रैप थे. हरी अप.
टाइम इज रनिंग आउट. आप टाइम बस नहीं हो रहे बोल रहे, इसीलिए मैं आपको ज्यादा टाइम दे रहा हूं. इफ 1 minute इज व्हाट नीडेड, आई एम गिविंग 1.5 minute. 2 minutes चाहिए तो 2.5 minutes दे रहा हूं, ऐसा. बट यू शुड सॉल्व इन लेस टाइम देन दिस. थोड़ा प्रैक्टिस कर लो. ट्राई टू इंप्रूव योर स्पीड. क्विक. ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी. Keep giving the answers. Keep giving the answers. Still there is time. Time up. फंक्शन कॉल इनफाइनाइट जा रहे. अच्छा, देखते. f of 423 comma 5, a n a r, n greater than 0, true. So return r plus n mod r, 423 mod 5, रिमाइंडर तो 3 आएगा. एंड रिकर्सिवली हम 423 फ्लोर डिवीजन 5 कितना थे, 5 8s are 40, 5 4s are 20, comma 5. So this is n, this is r. Now n greater than 0, true. So return r plus n mod r will be 4 plus f of 16 comma 5. n is greater than 0, so 5 plus एक मिनट, यहां रिमाइंडर कितना आएगा, 5 16s 4 only. f of 16 comma 5. n is greater than 0, so it return 5 plus remainder would be 1 plus f of 3 comma 5. This is n, this is r. Now n is greater than 0, yes, so 5 plus 3 mod 5 would be 0 plus 3 divided 3 mod 5 will be 3 plus f of 3 divided by 5 is 0 comma 5. n is greater than 0. Zero greater than 0, false. This is not equal to, right? Abdul Aziz Khan. If it is n greater than or equal to 0, then it will run infinitely. But it is just greater than. So here the condition is false. As if is false, else execute. What else says? Return r. So it return 5. So here it would be 5 plus 3 plus 5. That is 13. 13 is written here. So here it would be 5 plus 1 plus 13. That is 6 plus 13, 19. 19 is written. So here it would be 5 plus 4 plus 19. This is 9 plus 19, 28. 28 is written here.
5 plus 3 plus 28, 36. So final return value is 36. Okay. Option D. All right. 14 students answered correct. Ambi, Aniket, Vaishnav, Kuheli, Shubham, Akash, ML, Pardhraj, Gaurav Sharma, Komal, Leelesh, Anjali, Sardhak, Roshan. Okay. Swapnil, you are not there? कोई नहीं. Question number 12. The output is dash. Define fun of S1 comma S2. If S1 is none or S2 is none, return -1. Else, okay, we got something. So print fun of S1 comma S2. I am making it timeless, so do it.
All are done. Shall I stop the poll? Firstly, the given are sets. See, it does not support duplicates. So, remove duplicates. I am writing one of the possible order 1, 2, 3, 4, 5, 6. And S2, 1, 2. It removes all the duplicates. Now we are passing these two sets as arguments to this function. So this is S1, this is S2. S1 is none, S2 is none, no. So else I is equal to length of S1 union S2. So what is the S1 union S2? Same, because it removes duplicates. 1, 2 already common hai. So what is the length of this? 6 plus length of S2 dot difference of S1. What is S2 dot difference of S1? S2 पे रहना है, S1 पे नहीं रहना है. It is S2 minus S1. ऐसा कुछ नहीं. It is an empty set. So length is 0. So what is I? 6. Next, return I plus, that is 6 plus fun of S1 dot intersection update of S2. So S1 dot intersection update आप समझ लीजिए of S2. That means S1 will become common values between S1 and S2. So S1 now becomes 1, 2. So now S1 will be modified to 1 and 2, comma S2 dot difference update of S1. S2 dot difference update of S1. It means S2 will be modified to S2 minus S1. What is S2 minus S1? S2 पे रहना है, S1 पे नहीं रहना है. Common values है. So difference 0 है. So this we are passing as argument again for S1 and S2. So now it is fun of 1, 2, comma empty set. If S1 is none or S2 is none, S2 is none. So return minus 1. So what it return? Minus 1. It returns minus 1. So it is 5. 6 plus minus 1, 5. So finally it return 5. Is this clear? Is this clear? Option C. Okay. Einstein, Kuheli, Ambi, ANK, Akash, Aniket, Vaishnav and Pardhraj given right answer for this question. Good. Next question. What does the following Python code segment print? Right, honey. Take care. So we have got some ARR, AY array. Okay. So it is just a loop based, no recursion.
I think 2 minutes is more than enough. 2 minutes is more than enough. Solve this. Time up. We are given an array, means list, with the values 1, -2, 3, -4, 5. This is the array. We have an empty list result. Okay. For I in the range of length of array, so इसका length तो 5 हो गया. So I will be 0. When I is 0, if array of 0 less than or equal to 0, 1 less than or equal to 0, false. So else result dot append array of I minus 1. So it append result of -1, where what is result of -1? 5. So for the result, it append 5. Result of -1 is array of -1 is append array of -1. That is 5. Next, when I is equal to 1, array of 1, -2 less than or equal to 0, true. So it append array of I, array of 1 plus I plus 1. What is array of 1? -2 plus 1, that is -1 is appended. So यहां हम दो ऑप्शन को ऑप्ट आउट कर सकते, फिल्टर कर सकते. नाउ I becomes 2. array of 2, 3 less than or equal to 0, false. So else execute होगा. else क्या कर रहे? append array of
I minus 1, array of 1. Array of 1 is what? Minus 2, which is minus 2. Okay. Still, B and C are in the race. I is equal to 3. Array of 3 less than or equal to 0, true. So it append array of I, array of 3, that is minus 4 plus I plus 3, that is minus 1. Okay, still B and C are in the race. So the last iteration करना ही पड़ेगा. I equal to 4, 5 less than or equal to 0, false. So it append array of I minus 1, array of 4 minus 1, array of 4 minus 1, 4, 3. So array of 3 is minus 4. So it append minus 4. So option B is the right answer. Option C is the wrong answer. Okay. Option B is the right answer. Einstein, Akash, Sujit, ML, Vaishnav, Sardhak, Pardraj, Lilesh given the right answer for this question. Good. Next question. The output printed by below code segment will be dash. Okay. Do it. Quick. It's a tree recursion based question, I think. So all are with option B. 43057. Acha. Head recursion, tail recursion. Okay. 7 and 0 दोनों आना चाहिए. ऐसा है क्या आइंस्टाइन? मतलब यहां और 0 भी आना चाहिए क्या? देख लेते. विल सॉल्व इट. मेरे को तो याद नहीं है. सॉल्व करेंगे. एटलीस्ट अगर ऐसा है तो अच्छा जल्दी करने का तरीका बोल रहे हैं. हाँ. ओके. राइट. नो इश्यू. टाइम अप. Driver code is this: f of 7, x is equal to 7. If false,
elif be false, so it call f of 5 and then print x. X is 7. So at last we should get 7. So option D you can eliminate there itself. X is 5. If false, elif false. So it call f of 3 and after that it print 5. Okay. Now f of 3, x is equal to 3. Now elif is true. So it print x plus 1, 4, and then f of x minus 1, f of 2. So first will be printed is 4. So there itself you can say option B is the right answer, because after printing f of 2 gets executed. Okay, let's see. X is equal to 2. Elif will execute. So it print x plus 2, 3, and then f of 1. Now f of 1 will satisfy the base case. So it print 1 minus 1, 0. So print 4, print 3, print 0, print 5, print 7. So finally output क्या आएगा? 4, 3, 0, 5, 7. Option B, right answer. Oh, good. All have given the right answer for this. 17 students. Einstein, Ambi, Saransh, ANK, Anjali, Shubham, Akash, Kuheli, Hani, ML, Roshan, Pardhraj, God, Loki, Lilesh, Vaishnav, Pratik. Okay. Fine. Next question. What is the output of the following Python program? Something similar to this. Okay, do it. Hope you are solving with pen and paper, not on the compiler. है ना? आपको चाहिए तो सेशन के बाद कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करके देखो, लेकिन अभी मत करो. गेट एग्जाम में आपको पेन एंड पेपर के साथ ही करना पड़ेगा. सो वो ही आदत करो. ड्राई रन आदत करो बेटा, ड्राई रन आदत करो. हरी अप. बहुत लंबा चल रहा है. आपको कुछ शॉर्टकट पता है ना आइंस्टाइन? आप अभी कुछ शॉर्टकट बोले थे, वो शॉर्टकट में करो.
खेल खत्म। कोई नहीं, टाइम अप। g of 7 comma 5, this is capital A, this is capital B. If B equal to 0 or A less than B, they are the base cases. A less than B false, so it return g of A minus 1 comma B plus A minus 1 comma B minus 1. B minus 1. Now A greater than B, so it return g of 5 comma 5 plus g of 5 comma 4. 5 comma 5, again B equal to 0 false, A less than B भी false है, so g of 4 comma 5 plus g of 4 comma 4. g of 4 comma 5, A less than B, return B. Now g of 4 comma 4, it return g of 3 comma 4 plus g of 3 comma 3. So it return what? 4 plus g of 3 comma 3 क्या होगा? g of 2 comma 3 plus g of 2 comma 2. So ये 3 रिटर्न करेगा, ये 2 रिटर्न करेगा, समझ सकते हम। 1 comma 2 plus 1 comma 1. So ये 2 रिटर्न करेगा। g of 1 comma 1 क्या करेगा? g of 0 comma 1 plus g of 0 comma 0. g of 0 comma 1 क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। 0 comma 0 will return a is what? 0. So it is 1 plus 0 1, 2 plus 1 3, 3 plus 3 6, 4 plus 6 10, 5 plus 10 15. So g of 5 comma 5 became 15. Now g of 5 comma 4, g of 5 comma 4, what would be this? g of 4 comma 4 plus g of 4 comma 3. g of 4 comma 4 का वैल्यू अभी हम कैलकुलेट किए थे 10. g of 4 comma 3 नहीं मिला, ठीक है। So what would be g of 4 comma 3? g of 3 comma 3 plus g of 3 comma 2. g of 3 comma 3 का वैल्यू 6 है। It would be g of 2 comma 2 plus g of 2 comma 1. 2 value 3. 2 1. Okay, g of 2 by 1. This would be g of 1 comma 1 plus g of 1 comma 0. 1 comma 1 value is 1 plus 1 comma 0. When b is 0, return a. So it is 1. 1 plus 1 will be 2. 3 plus 2 will be 5. 6 plus 5 11. 11 plus 10 21. So इसका आ गया 21. Now 15 plus 21 36. So g of 6 comma 5 value 36. Now g of 6 comma 4 कर लेंगे। 6 comma 4. This will return g of 5 comma 4 plus 5 comma 3. This will return g of 4 comma 4 plus 4 comma 3. g of 4 comma 4 value is 10 plus 4 comma 3 value is 11.
So this value is 21. 5 comma 3. Okay, हमको नहीं मिले अभी तक. Okay, 5 comma 3 will be g of 4 comma 3 plus 4 comma 2. 4 comma 3 का वैल्यू मिल गया 11 प्लस 4 comma 2 का वैल्यू क्या होगा 32 प्लस 31. 32 का वैल्यू 5. 31 by chance we got 31 somewhere. 31 नहीं, ठीक है कर लो. 31 का वैल्यू क्या होगा 21 प्लस 20. सो ये मिलेगा 2. 21 का वैल्यू 2. सो इट इज 2 प्लस 2 4. So this value is 4. 5 plus 4 9. So this value is 9. 11 plus 9 20. So this value is 20. This value is 21. So 21 plus 20 41. So g of 6 comma 4 will be 41. Now 36 plus 41 will be 7. नकुल आ सकता है बेटा. इसको अभी लगभग 4 मिनट तो लगेगा ना. लगभग 4 मिनट तो लगेगा. 4 मिनट से ज्यादा भी लगेगा. मान लो आपको 30 सेकंड में सॉल्व किए सो क्वेश्चन मिले तो आप तब नहीं पूछे सर इतना इजी क्वेश्चन मिलेगा क्या बोल के. 10 सेकंड में भी आप आंसर किए सो क्वेश्चन भी मिल गया था ना. मैच द फॉलोइंग. सो वो ही पॉइंट. एवरी क्वेश्चन विल नॉट रिक्वायर यूनिफॉर्म टाइम. देयर विल बी इजी क्वेश्चंस वेयर you should save the time. That time you should use for this kind of lengthy questions. Everybody. Okay? Definitely this kind of lengthy question is possible. Undoubtedly possible. चलो क्या हुआ इसका 77. Ambi only answered it within the time. Okay. Yes, definitely Nakul. For all the subjects, Maha revision and Maha Abhyas planned. For all the subjects of DS and AI, Maha revision and Maha Abhyas are planned. And tomorrow session would be by Siddharth Sabharwal sir. Okay. Tomorrow's session would be by Siddharth sir. I think ML का होगा. I actually forgot to keep the image of sir. I am sorry sir, Siddharth sir. Machine learning का है ML. So tomorrow ML का महा रिविजन होगा बेटा and followed by Maha Abhyas. And data structures is next Wednesday on 22nd. data structures का महा रिविजन है followed by Maha Abhyas. Okay. So guys, अभी तक हम 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आप बोलो कैसा लगा आपको ये प्रैक्टिस. और 25 क्वेश्चन है. सेशन इज नॉट एंडेड. अभी तक आपको कैसा लगा. मजा आ गया. सीखने के लिए कुछ मिल रहे. आपका प्रैक्टिस अच्छा हो रहे बोल के लग रहा. क्वेश्चंस गेट लेवल का लग रहा.
सम क्वेश्चंस आस्क इन टेस्ट सीरीज 2। रोशन, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस मैं ही दिया था ना, तो वो मेरा क्वेश्चन ही होगा ना। बहुत अच्छा लग रहा, लेकिन एक ब्रेक मिल सकता है, दिमाग थोड़ा ओवरहीट हो गया है। ब्रेक चाहिए? और 5 क्वेश्चन के बाद ब्रेक दूं या अभी दूं? I thought to give break after 20 questions because half of the session होगा तब तक। दिमाग खुल गया। और प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है रिकर्शन और लूप के क्वेश्चन में। अभी तो प्रैक्टिस चल रहा ना, अभी तो प्रैक्टिस चल रहा ना। ओके, someone asked for the break, no? Just have more 15-20 minutes patience. After 20 questions we will have a break. Okay, चलो, come on guys, I really appreciate all your efforts. एक बार लीडर बोर्ड चेक करेंगे। Now Ambi, you are on the top. Akash, Einstein, these are the top 3. Good Einstein, you were consistent. कुहेली, ANK, स्वप्निल जोश, अच्छा स्वप्निल आई थिंक moved out. ML Pardhraj, Vaishnav Rathod, Tamal Das, you people are on the top 10. Still 25 questions are there, so all you guys have equal chance to rank up and come in the leaderboard, guys. Okay, keep it up, don't give up. Question number 16. The output will be dash. This is called list comprehension. Yesterday we could not cover it, right? So मैंने बोला था जो भी पेंडिंग है वो मैं क्वेश्चंस द्वारा रिवाइज करता हूं बोल के। तो ये है लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। ये तो आप समझ सकते, कॉमन सेंस से भी सोचे तो आपको समझ में आएगा। ट्राई वेट, try this. Though you do not know what is list comprehension, बस आपको थोड़ा कॉमन सेंस से भी समझ में आएगा। आइंस्टाइन, बस एक 15 मिनट का इंतजार करो, आपको मेरे को सबको ब्रेक मिलेगा। एक 5 मिनट का ब्रेक देता हूं, 5-7 मिनट का देता हूं, ठीक है? कम ऑन, टाइम इज रनिंग आउट। अरे अब, अरे दो ही। ओके 1 2 3 4 5 6। हाँ ओके, ये YouTube का ये ड्रॉबैक है। हाउ मेनी ऑफ यू एंटर्ड द आंसर इन हरी, कॉपीइंग द अदर्स का आंसर कॉपी कितना लोग किए? हॉनेस्टली बताना। टाइम आउट हो रहे बोल के हॉनेस्टली बताना। हाउ मेनी डिड नॉट सॉल्व इट कंप्लीटली? आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि लास्ट 5 सेकेंड्स में धनाधन मेरे को जवाब जब मिला मैं तब समझ गया। ओके गुड, नो इश्यू। चलो, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। व्हाट इज द लिस्ट? हियर एक्स इज द लिस्ट। सो ये एक्स का इनपुट हम डायनामिकली दे सकते,
कैसे? इनपुट मेथड से, नहीं तो स्टैटिक इनपुट दे सकते, मींस यू कैन इनिशियलाइज द लिस्ट व्हेन यू क्रिएट इट। इन द अदर वे एक एक्सप्रेशन से भी आप लिस्ट बना सकते। सो व्हाट इज एक्स? एक्स इज ए नंबर। व्हाट इज एक्स? एक्स इज ए नंबर। ओके, वो नंबर क्या है? सॉरी, एक्स इज व्हाट? नंबर। वो नंबर क्या है? नंबर इंटू नंबर इफ number mod 2 equal to 0, means number mod 2 will be 0 for what kind of numbers? For even numbers. For even numbers it is number into number, else it is number to the power 3. It is not number multiplied by 3 beta, it is number cube. It is not number into 3, it is not multiplication, it is to the power raised to। तो वो नंबर कहां से आ रहे हैं? पर नंबर इन द रेंज ऑफ 10, मतलब 0 से लेके 9 तक नंबर्स लेना है। अगर वो नंबर इवन है तो स्क्वायर करो, ऑड है तो क्यूब करो, दैट इज व्हाट इट मीन्स। सो अभी x कैसा बनेगा? फर्स्ट, if number is equal to 0, 0 is even number, of course in maths it is neither even nor odd बोलते, but प्रोग्रामिंग में हम even जैसा ही ले लेना, क्योंकि 0 mod 2 is also 0, so 0 multiplied by 0। when number is 1, 1 is odd number, so it is 1 cube। when number is 2, 2 square। when number is 3, 3 cube। when number is 4, इवन नंबर्स को स्क्वायर कर रहा हूं, ऑड नंबर्स को क्यूब कर रहा हूं। 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 5 क्यूब 125, 6 स्क्वायर 36, 7 क्यूब, बस मेरे को मैथ इतना तक ही आता। 7 क्यूब, 7 7 जार 49, 49 7 जार 7 9 जार 7 4 जार, okay। now 8 square 64, 9 cube 729, right? So this is the list। so this is the list। now अगर आप इंडिसेस देखें तो these are the positive indices। of course you got indices however in the form of a number, and negative indices if I take, these are the negative indices। now I want x of 5, x of 5 125 plus x of minus 3 343 minus x of minus 2 64 plus x of 3 27। so what is this value? करना ही पड़ेगा। 125 343 27, 8 7 15, 3 4 7 2 9, 3 4 495 minus 64, it is 431 I am getting। 431। Pardraj, this question I have solved even in the course classes also, but the print statement was different। print statement was different।
या प्रतीक पाल, why this is giving the error in the compiler, because that is the reason. जैसा गॉड लोकी बोल रहे ना, it is a dictionary, it is actually not the list, it is actually not the list, it is actually dictionary. मतलब इसको ही हम ऐसा ले लेना, नंबर 0 है तो उसका वैल्यू 0, नंबर 1 है तो उसका वैल्यू 1, नंबर 2 के लिए उसका वैल्यू 4, नंबर 3 के लिए वैल्यू 27 एंड सो ऑन फॉर नंबर 9 729. सो आप डिक्शनरी आइटम्स थोड़ी ऐड कर पाओगे ना. हाँ, आप डिक्शनरी को ऐसा नहीं कर सकते ना, इसका सिंटैक्स अलग से देना पड़ेगा, ऐसा आप इंडेक्सिंग से नहीं कर पाओगे. गॉट इट? इसीलिए आपको एरर आ रहे. बट ये तो यहां क्या नंबर इनटू ऐसा दे सकते. एंड वन मोर थिंग यू कैन सी, करली ब्रेसेस. लिस्ट को करली ब्रेसेस हम यूज नहीं करते ना, सो इट्स ए डिक्शनरी एक्चुअल. बट आपको ये मॉडल समझाने के लिए मैं ऐसा बोल. ओके, इज दिस क्लियर? फिर भी आप ये वैल्यूज ले सकते, ऐसा कर सकते, बट सिंटैक्स अलग होना चाहिए. तो आप इसको सूडो कोड मान लीजिए. यू कैन जस्ट टेक इट एज लाइक सूडो कोड. थोड़ा सिंटैक्स फ्री समझ लो, तब सब समझ में आएगा. अगला सवाल, द आउटपुट ऑफ बिलो पाइथन कोड सेगमेंट इज डैश. So through this question, I would like to revise unpacking tuples. Tuple unpacking. Yesterday हम tuple unpacking के बारे में बात नहीं किए. ये क्वेश्चन से मैं बात करता हूं tuple unpacking के बारे में. Okay? How many are aware of this? If you say I know, you can type it. If you do not know about unpacking, you can type no. If you are aware, you can type KNOW, otherwise NO. Accordingly, मैं okay. नो. ओके, टपल अनपैकिंग का मतलब है आप मल्टीपल वैल्यूज को एकदम असाइन कर सकते हैं. नॉर्मली दिस इज कॉल्ड पैकिंग. LHS पे एक ही वेरिएबल रहते, RHS में बहुत सारे एक्सप्रेशंस रख सकते. राइट? बट you see this, it is in the reverse format. So this is called unpacking. So X, you are unpacking and assigning in such a way that A comma star B. That means star indicates all. So you should leave one value for A, that is 5, and remaining all will be for B. ओके, इतना तो मैं अभी बोल सकता हूं. नाउ
उसके हिसाब से आप बाकी कोड समझ लीजिएगा, कर लीजिए। डू इट क्विक। I have given an idea, अनपैकिंग का आइडिया दिया था, सो उससे आप सॉल्व कर लो। आकाश, hope you understood. It actually hurts somebody else, so just be quiet, Akash. No one admitted, no, they are copying your answer बोल के, so you don't take it granted. Time up. Now star I comma j comma k equal to y, so y tuple में j k के लिए वैल्यूज लीव करके रिमेनिंग वैल्यूज i को असाइन करना है। सो j के लिए एक वैल्यू, k के लिए एक वैल्यू, ओई ऑर्डर में लीव करके अब i के लिए रिमेनिंग वैल्यूज -2, -3, -4. Now where 1 is equal to b of -2. b of -2 is what? -1, -2. Hope you understand. फिर भी -1, -2. So where 1 is equal to b of -2 means b of -2 is 1. Where 2 equal to I of 2? I of 2 is what? -4. Count equal to 1. For print length of b, length of I. अच्छा, we want count actual. We want count actual. Okay, no issue. For where in the range of length of b plus length of I. Length of b is what? 5. Length of I is what? 3, 8. So for I in the range of 8. Count is equal to count plus where. ये where क्या? अच्छा, ये variable. Okay. So count is basically count plus. Count is 1. So 1 plus 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Right? Every time you are adding where. Now 1 plus 1, 2 plus 2, 4 plus 3, 7, 11, 16, 6, 22, 7, 29. Yeah. So count is 29. All answered it correct. Pardhraj, Akash, Saransh, Einstein, Ambi, Kuheli, Aniket, Rohan Patil, ML. Okay.
Next question. Output will be dash lambda. समझ लेना. Yes, give your answer. Yes, Akash. Of course, I will explain. Quick. आपको जस्ट लाइक दैट समझने के लिए मैं एक रिलेटिविटी बोलता हूं लैम्डा का. सी लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एक टॉपिक है. बहुत सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है. उसमें मैक्रो डेफिनिशन शायद आपको पता होगा. डिड यू हियर दिस? सुना होगा है या नहीं? मैक्रो डेफिनिशन, hash, define. Yes, have you heard? Yes or no? कुछ तो जवाब तो दो. आकाश पांडे. सी लैंग्वेज में हैश डिफाइन से हम मैक्रो कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते, ऑल्सो फंक्शन को भी डिफाइन कर सकते. एंड कैन यू राइट मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन दैट फंक्शन और ओनली वन लाइन बॉडी? सिंगल लाइन बॉडी और मल्टी लाइन बॉडी इज सपोर्टेड फॉर द मैक्रो फंक्शन. सिंगल लाइन बॉडी और मल्टी लाइन बॉडी. जो भी सुना होगा ना उसको ही पूछ रहा हूं. सिंगल लाइन बॉडी लैम्डा इज दैट रिलेटिवली. ठीक है. सो पाइथन में लैम्डा इज टू डिफाइन फंक्शंस सच दैट इट कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. बस यहां सिर्फ ये ही लिए थे ना आप. LAMBDA ABC और इवन मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को भी ले सकते A plus B plus C. But the body of the function should be single line. Single line only. So it is similar to that. But वहां हम बस वो मैक्रो डेफिनेशन को आउटसाइड ऑल द फंक्शंस ही डिफाइन करना पड़ेगा ना. बट वो पॉइंट पे ये डिफरेंट है क्योंकि पाइथन थोड़ा सी से आगे है ना. सो व्हाट यू आर डूइंग, d is equal to fun of 4. So 4 is what? N value. 4 is what? N value.
बट डी इज व्हाट नाउ? डी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट बन गया अभी. सो डी ऑफ 10, that means it is taking this 10 for A. So A is now 10. So what it return? A into n into n, which is 160. Okay. What is this option? C. Honey, Einstein, Akash, Kuheli, Aniket, ML, Seransh, Crack, Anjali, Rohan, Akash, and Ambi given the right answer. Okay. Next question. DA का है बेटा. DA पेपर में आए सो. रिफरेंस वही ऑब्जेक्ट मान लो, रिफरेंस ही पास किए. Yeah. So this is the question asked in DA paper in this 2024 year for 2 marks. ये 2 marks का question है बेटा. It is on the dictionaries. Count is this function. It is not predefined method of count. It is not that count. Count is what? This function. So which of the following is the output of the code? This is the ड्राइवर कोड मान लो या यहां से मान लो. डू इट. कैन आई स्टॉप द पोल नाउ? पोल स्टॉप करूं? ठीक है, कैसे तो भी टाइम हो गया. ओके. Child dict equal to dict. You have created an object or empty dictionary. Child dict of 0 equal to 1 comma 2. One equal to 3 comma 3 4 5.
क्या कर रहा हूं? 3 4 5 2 6 7 8. This is child dict. Now print count of child dict comma 0. You are passing this as argument to the count and with I 0. If I not in child dict dot keys, keys means these are the keys. I तो है, so ये false हो गया. I पहले कितना था? 0 था. ANS is equal to 1. Okay, ANS is equal to 1. Now for J in child dict of I, for J in child dict of I, मतलब child dict of I is what? 0. So for J in child dict of J in child dictionary of 0. What is child dictionary of 0? 1 2. That means when J is equal to 1, when J is equal to 2. Okay, when J is equal to 1, ANS is equal to ANS plus count of child dict. You are passing calling recursively the same CD मान लीजिए, comma J is what? 1. Now I not in keys? No, it is there, false. So here again ANS is equal to 1 for J in child dict of 1. Now this is I. That means for J in 3 4 5, that means J is 1, J is 3, J is 3, J is 4, J is 5. When J is 3, ANS is equal to ANS plus child dict of 3. 3 is not there in the keys, so it return 1. So it is 1 plus 1, 2. Here also child dict of 4 5 nahi hai, so ANS will be 2 plus 1. Here 3 plus 1 4. And written answer. So this is returning when J is 1, this is returning 4. So 1 plus 4 हो गया 5. Okay. Now when J equal to 2, when J equal to 2, ANS is equal to ANS plus, ANS कितना हो गया अभी? 5 plus child dict of J, what is that? 6 7 8. 6 7 8. Now also if you see, okay, J is 6, J is 7, J is 8. यहां ANS 1 से स्टार्ट होके 6 कीज पे है नहीं, so when I is not in keys, it return 1. So it is 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4. So ANS is again 4. So it also returns, okay, it also returns what? 4. Now ANS is 5 plus 4 9. 9.
So what is the final final ANS? 9. Is this clear? And solve this. What does the following Python code segment print? अच्छा क्या हो रहे? हेलो, ये तो आ रहे नहीं. चलो, do this. What happened? Stuck क्यों हुआ? Guys, am I visible and audible? एक मिनट रुको. Am I visible and audible? It is coming. नहीं. नो, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ ये डिवाइस का. एक मिनट रुको. इंटरनेट कनेक्टिविटी. वाई. सिस्टम में तो प्रॉब्लम ही नहीं आ रहे. नो, चलो देख लेते. आप तो सॉल्व करके जवाब दे देना. इसको सॉल्व कर लो, जवाब चैट बॉक्स में दो. एक क्वेश्चन के लिए तो चैट बॉक्स में दो. प्रिंट मैक्स ऑफ रिजल्ट कमा मिन ऑफ रिजल्ट.
D. Okay. We have array result for I in the range of length of array means I is 0, I is 1, I is 2, I is 3, I is 4. If array of I greater than 0, minus 1 greater than 0, false. So result dot append array of I minus 1, array of 0 minus 1, that is minus 1, array of minus 1 is minus 5 plus 1, so minus 4, and when I is 1, minus 2 greater than 0, false. So append minus 1 plus 1, 0. When I is 2, 3 greater than 0, true. So append I minus 2, 2 minus 2, that is a 0. Array of 0 is minus 1 plus 2, that is 1. When I is equal to 3, minus 4 greater than 0, false. So append array of 2, that is 3 plus 1, 4. And when I is equal to 4, minus 5 greater than 0, false. So array of 3, that is minus 4 plus 1, minus 3. So finally आपको रिजल्ट लिस्ट बनेगा 4 0 1 4 3, minus 4 0 1 4 minus 3. Now what is max of this? Max is 4, min is minus 3 or minus 4? Minus 4. So 4 comma minus 4. Okay. Now let us have a break. बस 8-10 मिनट्स का ही ब्रेक, 20 मिनट यूट्यूब में नहीं दे सकते बेटा, ठीक है? You can watch while eating, eat while watching, no issue. Thank you. Let's meet after 8 minutes.
वेलकम बैक एवरीवन। फिर से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, एम आई विजिबल एंड ऑडिबल? मेरा विजिबिलिटी ऑडिबिलिटी आप एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिएगा। What is the temperature right now? Here it is cold only, but I am taking the class in the closed room, no? So मैं तो AC चलाया था. Okay. Let us continue our practice. This is the first question after the break. The final count value will be dash. Do it quick. Hurry up. हनी डिसजॉइंट सुपरसेट सबसेट नहीं पता, सेट्स में तो पता होगा ना. इट इज a सिमिलर मीनिंग. रेगुलर सेट्स रहता है ना मैथमेटिक्स में, इट इज a सिमिलर मीनिंग. Yeah, I am about to explain. Okay. Now we have three sets. We know sets does not support duplicates.
So are there any duplicates? Yes. So इसको डुप्लीकेट्स निकाल के किए तो 12, 23, 25, 34, 45 and we have no duplicates in Y. In Z we have duplicates. So 45, 34, 12, 23, 56, 20. Now count equal to 1. Okay. If not, Y dot disjoint of X. That means is disjoint. What this is disjoint will do, like Y dot is disjoint of X. It returns true if no common elements. There should not be intersection. There should not be intersection in both Y, X. So in Y and X, common elements are there. Yes, even एक है तो भी false return करेगा. So Y dot is disjoint of X returns false, not of false. Not of false will become true. So if true and first input is true, so second input भी evaluate करना पड़ेगा. Now Y dot is superset of X. Y dot is superset of X. That means it is nothing but Y greater than or equal to X or not. Means in Y you should have all the elements that are in X or more. So do we have 12? Yes. 23? Yes. 25? Yes. 34? Yes. 45? Yes. 56 extra. Okay. Y is greater than, Y is superset of X. So it is also true. So true and true, true. So count will be count plus 1. So count becomes 2. Now, these are not nested if. These are independent if statements. Now, if X dot is disjoint of Z, X and Z have no common elements? No, there are common elements. There are common elements. So, this is false. This is false. Or Z dot is a subset of Y. Z dot is a subset of Y. That means if Z less than or equal to Y, it returns true. That means what are in Z, they should be in Y. What are in Z, they should be in Y, and Y can have even more. So 45 there, 34 there, 12 there, 23 there, 56 there, 20. 20 not there in Z, not in Y. So Z is not subset of Y. So it also returns false. So false or false, false. So this will not execute. Elif, if is false, so elif पे आएगा. Is X is subset of Z? Is X is subset of Z? 12, yes there. 23, 25, no.
25 is not in Z. So X is not subset of Z. So this will be false. As first input is false and you need not to evaluate. First input false हो गया ना and में. Second input evaluate करने का जरूरी नहीं. Now, as this if is false, else executes. So count will be count plus 2, count plus 4. That is 2 plus 4, 6. So what is the final count? 6. Okay. Akash Pandey, Akash Sharma, Kuheli, Pratik, Rohan Patil, Muskan Goyal, Raushan, Ambi Singh. Answered it correct. Good. Now everyone understood? Crack, honey. Now you understood or not? What is disjoint? What is superset? What is subset? Okay. Next question. The output will be dash. Okay. Max sum we are printing. Output मतलब max sum क्या होते? करो. टाइम फ्री रखा था, सो कर लो. थोड़ा फास्ट करने के लिए कोशिश करो. Try to do it fast. Are you done?
Shall I stop the poll? Now shall I stop the poll? Okay. So calling the function sum 0, max sum 0, n is 6a for I in the range of n. I0, I1, I2, I3, I4, I5. If I equal to 0, true. One input is true. So sum greater than max sum, 0 greater than 0, false. So this if is false. So sum equal to a of I. Sum equal to a of I. What is a of I? A of 0. If a of 0 greater than 0, if a of 0 is 2, 2 greater than 0, false. So else 0. So sum is 0. As एक मिनट इसका थोड़ा इंडेंटेशन शायद रॉन्ग है. ये भी इनसाइड द इफ. दिस इज ऑल्सो इनसाइड द इफ. बिकॉज नहीं, अच्छा ये इफ का है. हाँ ओके, सॉरी. करेक्ट. सो सम इज इक्वल टू 0 हो गया. Now as first time if is true, else will not execute, and this is outside the loop. So I becomes 1. If I is equal to 0, false, or if a of 1 less than 0, a of 1 less than 0, true. So as one input is true, this will execute. If sum greater than max sum, false. So sum is equal to a of 1. A of 0 is 2, right? Sorry, एक मिनट, यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो गया. A of I means 2, no? 2 greater than 0, true. So a of I. So sum becomes 2 here. Yeah. Now I is equal to 1. A of 1 greater than 0, less than 0, true. So if sum greater than max sum, 2 greater than 0, true. Max sum is equal to sum. So max sum will become 2. Now sum is equal to a of I. If a of I greater than 0, a of 1 is what? Minus 2. So it is not greater than 0. So sum होगा फिर से 0. Now I equal to 2. फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गया. -1 less than 0, true. So sum greater than max sum, 0 greater than 2, false. So sum is equal to a of I. A of I is -1. If -1 greater than 0, no. So sum तो 0 ही होगा. No change in the sum. Now I is equal to 3.
A of 3 is 3. So 3, first condition false, second condition false. A of 3 less than A of I minus 1. 3 less than minus 1 false. So this if will not execute, else aayega, else will be sum is equal to sum plus A of I. So sum plus 3 will be 0 plus 3 will be 3. Next, I becomes 4. Again, A of 4 less than A of 3. No. So else execute sum is equal to sum plus 3 plus A of I. A of 4 is 4. So this becomes 7. When I is equal to 5, A of 5 less than A of 4. 2 less than 4 true. So now this is true. Sum greater than max sum. 7 greater than max sum was 2. True. So max sum is equal to sum. So max sum becomes 7. Sum is equal to A of I if A of I greater than 0. Yes. So sum becomes 2. Now, if sum greater than max sum, no. So print max sum. 7. ये execute नहीं होगा. 7 execute. 7 आएगा. Okay. Saransh, Hani, Akash, Pratik Pal, Akash Pandey, ANK, Roshan, Pardhraj, ML given the right answer for this. Good. Yeah. Contiguous सबअरे का maximum sum दे रहे. Correct. Next question. Previous gate question. Consider the following Python function. What does this Python function fun do? Select the one appropriate option below. It finds the smallest element in D from index S1 to S2. It performs merge sort in place on this list D. It reverses list D, swaps the elements in D at indices S1 and S2 and leaves the remaining elements unchanged. Akash, I'll show. After 2 questions, I'll show. Okay, so what would be the answer for this? ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा. एक एग्जाम्पल लेना ही पड़ेगा. मान लो D is something like 10, 20, 30, 40, 50. S1 is 0, S2 is 4.
Okay, if S1 less than S2, D of 0 comma D of 4 is equal to D of 4 comma D of 0. So it becomes 50, it becomes 40. And calling the function again with fun of the same, now 50, 20, 30, 40, sorry, this is 10, 10, comma S1 plus 1, S2 minus 1. Now 1 less than 3 true. So what it is doing? These two are getting exchanged. So it in turn call fun of 50, 40, 30, 20, 10, S1 plus 1, S2 plus 1, S2 minus 1. If S1 less than S2, no. So here it ends. So basically क्या हुआ हमारा लिस्ट? हमारा लिस्ट क्या हुआ? रिवर्स हो गया. So it reverses the list. It reverses the list. Okay. Next question. Consider the following Python program. This is actually, this code is the PYQ of CS paper, but this I have given on my own. I have given my own arguments, but code आपको CS paper PYQ में दिखेगा. Okay, so solve this. Okay, previous question के लिए ये 10 students सही आंसर दिए, कोई नहीं. Solve this. Quickly solve it. Time up. F of 19 comma 3. When n is 0, that is the base case. Else if n mod 2,
when this will be true, for odd n value true hoga, right? So n is odd, so it return f of n by 2, 19 by 2, that is 9 comma 2 into k, that is 2 3s are 6 plus k 3. Now this is n, this is k. If n mod 2, 9 is odd, so it return 9 by 2, 4 comma 2 into k, 12 plus 6. Now it is even, so it returns f of n by 2 comma 2 into k, 24 minus k, that is 12. Next, it is again even, n is even, so else will execute. So 2 by 2, 1 comma 48 minus 24. Next, now 1 is odd. So if will execute. What is in if? F of n by 2, 1 by 2 is 0 comma 2 into 48, 96 plus k. Now n is 0, so it returns 0. So now 0 plus all the value is 0 plus 48 minus 24 minus 12 plus 6 plus 3. This is 48 minus 36, 12, 12 plus 9, 21. So the right answer is 21. 21. Okay. Seransh, Rohan, Kaheli, Muskan, Einstein, ANK, Roshan, Leelesh, Kaustubh. Good. Next question. What will be the output of the following Python code? Do it. Class. Oops concepts around. Time up. Now, here you are creating an object for class B. While creation of an object, its own constructor gets invoked and this class B inherits class A. So this is subclass or derived class. This is superclass or base class. While creation of object, its constructor gets invoked. What is in the constructor? Super dot init. That means this will be coming. Means you can say it will execute this particular init. Or this init method or constructor gets invoked. And what is init?
self dot multiply of 15. Self dot multiply of 15. So I value is 15. Self dot I is equal to self dot I is equal to 4 into I. So as per this, it is becoming 60. But if you see, here also we have multiply function. Here also we have multiply function, multiply method. Here also we have multiply method. Now what happens? This method override superclass method. Subclass method override superclass method. That means this code will not work. What will work? When you say self dot multiply of 15, this will work. So 2 into I, that is 2 into 15, that is 30. Now print self dot I. So what will print? 30 gets printed. Right? 30 is getting printed. Hello? Okay. Next, one more question, but here you have underscore underscore I. So whenever you have underscore underscore prefix, that indicates it is a private variable. Underscore prefix, just one underscore prefix, that indicates it is a protected member. So आपको जावा में oops कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं. So solve it. लीडर बोर्ड देख लेंगे भैया, रहने दीजिए. Okay. Now you have created an object for class B. Class B inherits class A. So again it is a subclass. It is superclass. While creation of an object, its
init constructor gets invoked, in which you are in turn invoking super class init, where I have a private member and one public member. Without any prefix means public member. And if you look at, we do have super self dot underscore I is equal to 4, self dot j equal to 6. So will this I override this I? No, it cannot override. It cannot override super class I. Why? Because it is private member, but it overrides. J overrides. So here J value becomes 6. Now display I J. So what gets displayed? 3, 6. Correct? No. 4, 6. Why? Why? Do you get 3, 6 or 4, 6? C is object of which class? C is object of which class? C is object of class B. So can subclass object access superclass private members? No, it cannot access. Can subclass access भी नहीं है? Subclass object cannot access superclass private members. So whenever you say print I, it will not take superclass I. It will take its own class I, that is 4, and superclass I, but it is overridden. So it is overriding superclass J. That is how you got 4, 6, but not 3, 6. बहुत लोग 3, 6, 3, 6 दिए थे ना? अब समझ में आए? अब समझ में आए या नहीं? Okay. All right. Next question. The output printed by below code is dash.
Guys, now I can't give more time because the time is already 10 o'clock. So I will be giving little less time. So please do it fast. If the required function or variable is already present in subclass, then it will be overridden to the same variable or function of parent class. If the required function or variable is already present in the subclass, then it will override the same variable of parent class. See Pardraj, whether it overrides or not, वो दूसरी बात है. Okay, whether it override or not, that is secondary part. But C is the object of which class? Subclass. So whether you have one I, your superclass has one I, which gets priority in the access? First, your variable gets the priority. In that sense also, you will get your I, your J. Okay, but it overrides. When you access, you will get your members. Through superclass object, if you try to print ij, through superclass object, if you try to print ij, it will you will get superclass members. देखो, इसके बाद मैं बोलता हूं, यहां 4-6 ही आएगा. ये ओवरराइड कब करेगा? When you want to access the superclass variable, if you use super keyword, then you will get superclass object only, superclass variable value only. Hope I have not used super dot, यहां super dot I बोल के यूज नहीं किया ना. If at all I use super dot I will be getting superclass member. Okay, anyway, DSK का महा रिवीजन नेक्स्ट वेडनेसडे 22 को होगा. अच्छा, इसका मैं पोल एनेबल ही नहीं किया. उसका रिजल्ट क्या है? 4-6. I have not I think I have enabled the poll for this. फिर से दो. अच्छा, इसको मिनिमाइज किए तो टाइम नहीं चलेगा. ओह,
Yep. String equal to gate exam, f of string, I equal to 1 if length of SC is 0 return, else print S of length of S. How much? 1, 2, 3, 4, space is there, 5, 9, 9 minus I. What is I? 1. That means it is printing S of 8. That means M. And F of S of 2. F of S of 0, 1, 2. So it is calling TEEXAM. First you got F of gate exam. Now it in turn call now length is not 0. So it will again print M. And 0, 1, 2. So इससे स्पेस एग्जाम पे आएगा. ये फिर से M को प्रिंट करके 0, 1, 2 X ये M पे आएगा. ये M प्रिंट करके M पे आएगा. लेंथ ऑफ S अभी भी 0 नहीं. So it will print M and then it call empty list. So how many times you got M? 1, 2, 3, 4, 5 times you got M. Okay, good. हाँ क्या बोल रहे पार्थ? So you don't have function in subclass, then it go to the parent class to invoke the respective function. Correct. If at all you have, it overwrites if it is the same signature. It overwrites if it is the same signature. Okay. Next. The output of below Python code segment is dash. Just guess. Yesterday in the PDF I have kept what format specifier if you use, what you will get. Don't know how many of you gone through the PDF. सब लोग PDF मांगा था. मैंने टेलीग्राम में शेयर भी किया था. Don't know how many of you gone through it. अब पता चलेगा. देखो, एक तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉलेज से गेस कर सकते. जब आप डी देते ना, डी का मतलब क्या है? डेसिमल इंटीजर है ना. देखो, whenever you give D, it will give the day in the number format. So what is today's day? Today's is 16th. So definitely you get 16. Now you have given small b. When you give small b, you will get the month name in the short version. Capital B, you will get the full version. So month name you get in the short version.
Y, capital Y, you will get the full year 2025. Small y, only the last two digit 25. Small y, you will get the short version like this. Capital Y, you will get the full version. सर ये क्वेश्चन हम गेट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पता नहीं, बट यू कांट एक्चुअली चैलेंज. अगर ऐसा आए तो भी आप चैलेंज नहीं कर पाओगे, बिकॉज डिक्शनरी सॉरी ये फॉर्मेट स्पेसिफायर डेट टाइम मॉड्यूल से है, सो वो पाइथन का पार्ट ही है, तो आप चैलेंज नहीं कर पाओगे. समझ रहे? You can't actually claim that it is out of the syllabus. So just for the safe side, आपको ये याद दिलाने के लिए, वो कॉशन के लिए मैं एक सवाल ऐसे सवाल रखा था. So better you just go through this table once. Okay? ये तो easy है बेटा. It is actually easy, right? So इसका जवाब है A. Right. Next question. The output printed by below Python code segment is dash. Ordered dictionary. वो नाम से भी आप पहचान सकते. पाइथन में बहुत आसान है एक्चुअली. So try this. रोशन जी, एट द एंड क्यों? देखो पाइथन में 2024 में तो 5 मार्क्स 4 मार्क्स ही आया था. एक क्वेश्चन को हम डेटा स्ट्रक्चर पाइथन मिक्सड करके ले सकते. ओके, 5 मार्क्स मान लो. दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग लिटिल मोर. डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग 7 मार्क्स, 5 to 7 मिनिमम होगा पाइथन से. डेटा स्ट्रक्चर से भी उतना है. आई बिलीव पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स टुगेदर 12 प्लस मार्क्स आई एक्सपेक्ट दिस ईयर. पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स अगर आप एल्गोरिदम्स का भी मिलाए तो वो तीन मिला के डेफिनेटली यू कैन गेट 15 प्लस मार्क्स. सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, असिम्प्टोटिक नोटेशंस, रिकरेंस रिलेशंस, उसका भी अगर आप गिने तो मिनिमम 15 मार्क्स तो आएगा. मिनिमम 15, उससे ज्यादा ही होगा, बट मैं मिनिमम बोल रहा हूं. ओके, चलो. We have a dictionary. Initially A is 1, B is 2, C is 3, D is 4. Now pop A, pop D. Now you are inserting A. So in what order you are inserting, it preserves that order. Ordered dictionary means in what order you insert, it preserves the order. And C का value 5 की है. Can you have duplicate keys in the dictionary? No. So what it will do, it change the value of C to 5. Pop B and B को फिर से ऐड कर रहे. Now for key comma value in D dot items, print key comma value. So what you will get? C5 A2 B1.
ओके। रोशन विथ एल्गो 20+ होगा ना? हो सकता है बेटा, तथास्तु। मैं मिनिमम बोला था, मिनिमम 15 तो बिल्कुल आएगा। मिनिमम 15 मार्क तो बिल्कुल मिलेगा आपको, उससे ज्यादा भी हो सकता, जितना ज्यादा हम अभी तो नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए। आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स फ्रॉम बिलो। पहला एमएसक्यू क्वेश्चन आपको अभी मिल रहे। इसका जवाब क्या था? सी ना? ओके। आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स फ्रॉम बिलो. So read properly and give your answer. Read properly and give your answer. प्रतीक पाल, टेस्ट सीरीज का भी होने दो, डीपीपी होने दो, वीकली टेस्ट होने दो, गेट बिफोर गेट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट, कुछ भी ले लो, सारे क्वेश्चन तो मैं ही बनना पड़ेगा ना। आई शुड प्रिपेयर नो। सो मेरा ही है क्वेश्चन। बहुत बार तो नहीं आया होगा बेटा प्रतीक पाल, मे बी ट्वाइस यू माइट हैव गॉट, बिकॉज वी मेक श्योर नॉट टू रिपीट मेनी टाइम्स। सो हमेशा नया नया क्वेश्चंस ऐड करते रहते, 10-20% थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चंस तो रिपीट होते रहते, 10-20%। टाइम अप। हाउ टू आंसर एमएसक्यू? आकाश पांडे, यू आर आस्किंग द मीनिंग ऑफ एमएसक्यू। हाउ टू आंसर का मतलब क्या होता? एमएसक्यू इज एक्चुअली टेस्टिंग योर कॉन्सेप्ट। एमएसक्यू आप अटेम्प्ट करना बोले तो आप कॉन्सेप्ट पे स्ट्रांग होना जरूरी है, नहीं तो मैं सजेस्ट करता हूं लीव इट, डोंट टेक रिस्क। व्हेन योर कॉन्सेप्ट इज नॉट स्ट्रांग, डोंट टेक रिस्क, लीव इट। नहीं, because MSQs don't have negative marking, you can actually give a try. I can't say leave it, they don't have negative marking, but थोड़ा समझ के करना, ठीक है। अच्छा, कैसा देना? ओ, मेरे को भी पता नहीं, देखते कितना ये पोल कैसा एक्ट करते। मैं भी पहली बार ले रहा हूं पोल से यूट्यूब में सेशन। आई ऑल्सो डोंट नो हाउ यू विल गिव द आंसर, यू हैव टू गिव द आंसर। देखते। फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए। There can be try block with finally block and without any except block. Yes, you can have try and finally, except का कोई जरूरी नहीं, finally है तो। There can be try block with except block and without any finally block. Yes, this is also true. Try except is also fine. There can be try block with multiple except blocks. Yes, followed by multiple else blocks. This is wrong. Single else block only allowed. Try except else. But except blocks आप कितना भी रखो, except is like a catch, कितना भी रखो, but else तो एक ही रखना चाहिए. So else will execute when exception does not arise. Okay, so this is false.
There can be try block with except block followed by finally followed by else. Wrong. It should be try except else finally. This should be the order, or try except finally, or try finally, or try except, or try except else. So finally के बाद else नहीं आना चाहिए. So ये भी wrong है. So I want false statement. So इसका जवाब C, D. शायद Einstein you have given C, D only. 0%. Okay. Yeah, finally must be last if present. Okay, next. ठीक है बेटा, MSQ को पोल इग्नोर कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, चैट बॉक्स में दे दीजिए. फिर से MSQ, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स फ्रॉम बिलो. करेक्ट स्टेटमेंट को पहचान लो. Public members of base class can be accessed by only its derived classes. No. Public members are accessed even without inheritance. So there is no need of inheritance for the public member access. Wrong. Private members can be accessed only its objects. Yes, correct. Protected members can be accessed by only its objects and its derived class objects. Yes. Default access modifier for all data members in Python is protected? No. Public. Okay. So the right answer must be, as you want correct statements, B, C. Okay. Next ब्रेक लेते बेटा.
जस्ट 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, जाने से पहले लीडर बोर्ड। आकाश, यू आर ऑन द टॉप, इसके लिए ही पूछ रहे ना आप? हाँ, ओके। अम्बी, आइंस्टाइन, ओके। Let's take a break. Just 5 minutes break.
Okay. Once quickly confirm my audibility and visibility. Am I audible and visible? Everyone, once please confirm my audibility, visibility quickly. Clear? Okay. So let us continue. Next question. One more MSQ question. Identify correct statement or statements from below with respect to the given code. This is variable number of arguments or arbitrary arguments, we can say. This is a question on variable number of arguments or arbitrary arguments. अच्छा, पोल नहीं बोल के सोचे थे ना, ठीक है. यू गिव विथ स्पेस देना या कॉमा से देना, किसी को आइडिया है मल्टी सेलेक्ट आंसर्स कैसा देना है, कॉमा से या स्पेस से? किसको भी एक्सपीरियंस है पुराना सेशंस में? Without comma, let's see. Hurry up. Time up. When you give star a, this is called variable number of arguments. Here I have given 4 arguments for a, but you can give 1, you can give 2, you can give more also. So max of a, what is max? 3. Min of a minus 2. So it prints 1, but it said it prints 2, so it is wrong. Max of a 3 plus min of a minus 1. So it prints 3 minus 1 2. 3 minus 1 2. So it prints 2, but here it said it prints 4. Max of a 2 plus min of a minus 3. So it is minus 1. Here it said it prints 2. Max of a 2 plus min of a minus 3 plus only. All are wrong.
Oh, wait. It is minus, guys. It is minus 1. So it is 3 plus 1, 4. So only one statement is correct. Only one statement is correct. It is minus. Okay? Only B is correct. We want correct statement. Yes. Yeah, in the MSQ, only one also can be correct. That is the tricky part. Okay. Next question. One more. One more MSQ. Give your answer in the chat box only. No poll. No poll. Give your answer in the chat box. Identify true statement. Array as lists are slower compared to arrays as NumPy object. Default dict preserve the order of insertion of elements. Dictionaries, if implemented using default dict class, it never raises a key error. A chain map is a class that accumulates multiple dictionaries into a single list. We want a true statement. Pratik, why every function is not getting invoked one by one in previous question? Every function is getting invoked. Who said not invoked? Every function. अच्छा, एक minute. Okay. हाँ, Pratik. Pardhraj, you are correct. Acha, I think I have not taken like that. Okay. I also have confused. See, arrays as lists are slower than array as NumPy object. Yes, almost 50 times slower. Default dict preserve the order of insertion. Wrong. Ordered dict preserve the order of insertion. Dictionaries, if implemented using default dict, it never raises key error because it assigns default values. Chain map is a class that accumulates multiple dictionaries into a single list. Correct. So A, C, D are correct. Actually, Pardhraj, your point is correct, beta. I was taking only max min. ऐसा थोड़ी होता ना. इसमें मैक्स लेना मिन लेना. मैक्स लेना है, मिन लेना है. ये तो 3 होगा प्लस इसमें मैक्स 0, min -2. So this is -2. So it is 3 plus -2, that is 1. So फिर भी ये wrong है. यहाँ max 3 min -2, that is 1 minus max 2 min -1, that is 2 minus 1, 1. तो दिस इज 1 minus 1 0. अच्छा, ये भी रॉन्ग है. इसमें मैक्स क्या है?
इसमें मैक्स 2 min -1 दैट इज 1 प्लस इसमें मैक्स 2 min -1 -3. So this is 1 plus -1. So 1 plus -1 that is 0. इसमें मैक्स 2, इसमें मैक्स -1 that is 1 plus 2 plus -3 that is -1. So it is 1 -1 0. So for the previous question it is not 4 guys. Yeah, option B is not correct. Option D is correct. Option D is correct. Pardraj, thank you. Thank you. इसमें मैक्स 1 था ना, 1 plus -2 that is -1. 1 plus -2 is -1. Max is 1, right? So it is 3 minus 1. 3 minus 1, 2. Okay. Even option A is also correct. Option A is also correct. Correct. और भी ऐसा कुछ है क्या मिस्टेक्स? 1 1 minus 1 0. 3 minus 2 1 minus 1 0. Only option A and D. Yeah. Thank you, Pardraj. Next question. Arrange the below in the order of subset to superset relativity. Subset to superset relativity. Hurry up. We have more 6 questions. More 6 questions we have. ये चारों में सुपरसेट कौन सा है? पैकेज. पैकेज के अंदर बहुत मॉड्यूल्स होगा. पैकेज के अंदर बहुत मॉड्यूल्स होते. मॉड्यूल मतलब बस एक प्रोग्राम मान लो. एक प्रोग्राम के अंदर बहुत क्लासेस होते. हो सकता है एक प्रोग्राम के अंदर बहुत क्लास हो सकता है या एक क्लास भी रह सकता है. क्लास के अंदर बहुत मेथड्स या सिंगल मेथड हो सकता है. सो पैकेज, मॉड्यूल, क्लास, मेथड. We want
subset to superset relativity. So method, class, module, package. Method, class, module, package. So 4, 2, 1, 3. Option B. Option B. लगता है 15 मार्क्स गया. क्यों? क्यों ऐसा लगता है आइंस्टाइन? ओके. हनी, एमएल, कुहेली, सुजित, आकाश, पार्थराज. गुड. Next question. The final count value will be dash. List comprehension. Now it is list comprehension. Okay. Do it quick. Do it quick. We should finish in more 10 minutes. In more 10 minutes, let us finish the session. Einstein, focus. Focus करो बेटा. Mistakes are the key sources for learning, and mistakes are the stepping stones for success. Mistakes सबके साथ होता है, गलत सबके साथ होता है. वो गलत से कितना सीख रहे वो बड़ी बात है. हरी अप. मैं भी अभी गलत किया ना, अंटिल पारदराज सिंह रिमाइंडर्स, मैं भी गलत मान लिया था खड़बिड़ी में. राइट. So mistakes happens with everyone, no issue in that. Yeah. So guys, you can understand this. Now the new list is item. What is that item? If item mod 2 equal to 0 means even numbers of my list will be new list. What are the even numbers? 22, 44, 66. So this is new list. For I in the range of length of new list. Length of new list is 3. Length is 3. So for I in the range of 3 means I is 0, I is 1, I is 2. When I is 0, count is equal to count plus new list of 0, 22, that is 23. 23 plus new list of 1, 44. What is that? 67. 67 plus 66. 60, 60, 120, 133. Just adding up the even numbers of the list. That's it. With plus 1. So 133. Okay. Pratik, ML, Akash, Kuheli, Tech Savvy, Einstein. Right. That's what. Yes, Pardraj, you said it correct. Akash Pandey, good, good, keep going. Okay, next.
The output will be dash. Set equality. Set equality बेटा. हनी सिन्हा, पराक्रम में क्वेश्चन इजी होता तो सॉल्व हो जाता था. अच्छा, अब क्वेश्चंस इजी है आकाश? आज क्वेश्चंस इजी लग रहे आपको? बढ़िया, मतलब आपका प्रैक्टिस अच्छा हुआ. Time up. Guys, we know set is unordered and we do not have any duplicate. Unordered. Now, x is equal to I equal to L. I and L में same values है, कुछ भी order में रहने दो. 10 to 50, yes. So this is true. Here order is not matter, but you should have the same values. J not equal to K. 11, 22, 33, 44, 55. No, J is equal to K. So false. So print x comma y, true comma false. True comma false. Option D is the right answer. So option D. बहुत बढ़िया. Next. The number of times print statement is executed is dash. Print statement is executed. How many times print statement is executed? Just we want how many times, right? 1 minute काफी है इसका. Very good, Akash. So practice makes man perfect, man or woman, of course. So you are proving it again. आप साबित कर रहे ये स्टेटमेंट को फिर से. Good. गाइस, मेरा हिंदी सुन के आपको हंसना लग रहा है क्या? फनी, राइट? फनी हिंदी. क्या हुआ? क्या हुआ? ये SID क्या हुआ? मैंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया. Okay. Yeah. So we are given the sets. So first let us make it a unique element. S2 होगा 357. S3 no duplicates, रहने दीजिए. For I in the range of length of S1 and S3. S1 और S3 में क्या कॉमन है? सिर्फ 5. तो इसका लेंथ हो गया 1. Now for J in the range of length of S3 or S2, XOR S2, S3 XOR S2, symmetric difference. S3 S2 में कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के 1 2 4 है ना? So length is 3. So how many times this gets executed?
7 भी है ना, सॉरी 7 is also there. So length is 4. So I runs for 1 time, j runs for 4 times. So print statement executes 4 times. 4 times. S1 and S3 5 7 कॉमन तो 5 ही है ना, S3 में 7 कहाँ है? आप S1 S2 लिया होगा, S1 S2 लिया होगा ML. Okay. Answer is 4. What happened? No one answered it. Correct. Okay. Next. What is printed by below code segment? ये तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपको दिख रहा होगा बहुत सिंपल बोल के, बट सीखने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा. देखते कितना लोग सही जवाब देते इसको. एंड यूनियन पे कंफ्यूज हो गया. यूनियन इज और ऑपरेशन, एंड इज इंटरसेक्शन ऑपरेशन. Focus in the class. Focus in the class, everyone. I think personal things are not required. Please maintain the decorum of the class. You are all pursuing professional course, so be professional, behave professional, please. Okay. See, until you get a big number, or see, when I say A less than B, 1 less than 3, 2 less than 2, 3 less than 1, here it is false. 2 less than 2 भी यहां ही false आ गया. 1 less than 3 वो तो true है, so 3 less than 1 चेक करने का ही नहीं, यहां false आ गया. ये greater than b पहले ही false है, so what will be printed? False, false will be printed. Okay, next class, next session, next question. अरे यार आप मेरे को concentration ही disturb कर रहे. Please, the output of below code segment is dash. Output क्या है? ओके, इसका आउटपुट क्या है?
See, once it is true, you will go ahead. You will stop at false. Akash Pandey, you will stop at false. Okay. A2, B3, C4. If A less than B, 2 less than B, I told you it works like A less than B and B greater than or equal to C. 2 less than 3, true. 3 greater than or equal to 4, false. So if is false. If C greater than B and B not equal to A, C greater than B, true. B not equal to A, true. So this will execute, this will not execute. So print A plus B, 2 plus 3, 5, B plus C, 3 plus 4, 7, C plus A, 4 plus 2, 6. So 5, 7, 6 will be printed. Five, 7, 6 will be printed. Got it? The second print statement is getting executed. Okay. Einstein, Parth, Sai, ML, Tech Savvy, Ritik, Kuheli, Honey, God, Loki. Good. Last question of the day. The output of below Python code segment is dash. Last question of the day. Guys, don't get deviated. Just focus on the subject.
Hurry up. Time is running out. Nine, 13, 10. Okay. Thirteen. Quick, quick. Time up. A, B, C, we are passing these as argument. If any length is 0, base case hai. If length of A is less than length of B, what is the length of A? 4. Length of B? 3. Length of C? 2. 4 less than 3, false. Right? So if is false, elif is false, elif पे आएगा. B 3 less than 2, false. So else पे आएगा. ये डॉट पॉप 0, मतलब ये बनेगा ये बनेगा 7, 8, 9. 7, 8, 9, and written length of A. Now length of A becomes 3 plus f of ABC. Okay. Now 3 less than 3, false. 3 less than 2, false. A dot pop of 0. So it pops 7. Written length of A. Now length of A becomes 2 plus f of A comma B comma C. Now length became 2. Now length of A less than length of B. 2 less than 3, true. So B dot pop of 0. So B banega now 3 comma 4. 3 comma 4. Written length of B. What is length of B? 2. Now length of B is equal to 2. So written length of B plus f of A comma B comma C. Now what is A? 8, 9. What is B? 3, 4. What is C? 5, 6. 2 less than 3, 2 less than 2, false. 2 less than 2, false. So A dot pop of 0. So A becomes 9. Written length of A 1 plus f of 9, 3, 4, 5, 6. Now यहाँ 3 आ गया, 2 plus 2 plus 1. Okay. Now length of A is 1. 1 less than 2 is true. So B बनेगा 4 and written 1 plus f of 9, 4, 5, 6. So यहाँ और 1 ऐड होगा. Now 1 less than 1, false. 1 less than 2, true. So second elif will execute. So it will pop
सी को 6 बना लेगा ये, नो नो, सी को 5 बनाते, रिटर्न लेंथ ऑफ सी 1 प्लस एफ ऑफ 9 4 6 6 9 5। नाउ सो यहां और एक 1 ऐड होगा। नाउ फाइनली एफ ऑफ 9 4 6 सबका लेंथ 1 हो गया। सो 1 less than 1 false, 1 less than 1 false, else will execute, else will make A2 empty list, return 0 plus f of empty list 4 6. Now length of A is equal to 0. Now length of A equal to 0, so it return -1. So you got 0 plus -1. So what is the final value? -1 plus 1, 3 plus 2, 5 plus 2, 7 plus 2, 9. 9. You got 9, right? Not 10, 9. You should take this -1 at last. The base case -1 भी लेना है. Okay? Right. Now, Akash Pandey, you are on the top today. Good. Kuheli, you are on the second. Very good. Einstein, third. Superb. Ambi, ML on the next. Pardraj, Honey, ANK, Pratik Pal, Roshan, Saransh, Rohan Patil, Swapnil, Lilesh, Aniket Singha, Kaustubh, Anjali, Vaishnav, Tamaldas, Akash Sharma, Sujit, Dhanya, Roshan, Jayant, Sardhak, Gaurav, Tech Savvy, Arushi, Shots, God Loki, Tushar, Maskan, Pravallika, Shubham, Komal, Hari, Tony, okay, Hashtag Akshit, Pramod, Giraj, Devangi, Crack, Sai, Ritik. Good, good, good. Super. So congratulations, the toppers and all for your efforts. For all of you, for your sincere efforts. I really want to congratulate you all. Pardhraj, Lambda is just like a preprocessor directive, मान लो. It will take up the argument or it pass the reference. Okay? अभी नहीं. आप पेड क्लास में आ जाओ, मैं उधर एक्सप्लेन करता हूं. अब हो गया मेरा भी. ओके, मान लीजिए. यस गाइस, नाउ यू शुड टेल, हाउ डू यू फील, हाउ इज द सेशन, क्वेश्चंस कैसा लगा आपको? For GATE DA, what will be the good score? Good score means to be under 500, under 10. How?
top NITs. अच्छा. Good score can be 65 plus. I mean good marks. 65 marks DA में बहुत अच्छा मार्क्स है, काफी है. गुड. तो देख लेते हैं, कट ऑफ का तो थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा. ये तो सेकंड टाइम ही है ना, हमको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलेगा कितना स्टूडेंट्स अटेम्प्ट अपीयर होते, एटलीस्ट कितना स्टूडेंट्स अप्लाइड, उतना तो इंफॉर्मेशन मिले तो हम बात कर सकते. आई डोंट लाइक टू गिव सम कमेंट जस्ट लाइक दैट ऑन एनीथिंग until unless I have some authorized information. But see, minimum 28 तो होगा, उससे बड़ा भी हो सकता है. It depends on the difficulty level. It depends on the number of students appeared. We know, right? There is a formula. Yes. Okay. Thank you all. So before we leave, once again, एक QR कोड है मेरा टेलीग्राम ग्रुप का, आप ज्वाइन हो सकते. इसका PDF मिलेगा आपको ये टेलीग्राम ग्रुप में. थैंक यू. एंड टू रिमाइंड यू, tomorrow session there is tomorrow महा रिवीजन है ऑफ ML मशीन लर्निंग का. सिद्धार्थ सर ले लेते. एंड डेटा स्ट्रक्चर्स सेशंस वुड बी on 22nd 23rd Jan. Same 3 PM 6 PM. Maha revision, Maha Abhyas. Okay. Thank you all. Once again, I really appreciate all your patience, all your presence, all your energy. I really wish you all the very best. So, gear up your preparation and practice this remaining time for DA aspirants exclusively. Lagbhag 1 month time is there. So, this 1 month is very, very precious. So, keep up your full efforts. Prioritize gate preparation. Focus on the time management. Attempt as many mock tests as you can. Okay. Thank you so much, everyone. Once again, see you on Wednesday with data structures Maha revision. I wish you all the very best. God blessings will be always with you. Always for the hardworking people, genuine people, dedicated people. Definitely, you deserve the best. I wish you all the very best, guys. See you on Wednesday. Thank you so much. Good night, everyone. Bye-bye. Jai Hind.